Hello and good evening, and welcome to this class of the Economic Foundation. I hope you are all doing well. I hope you're all doing well. I hope you can see and hear me. A very good evening to all of you. Good evening, welcome. Hello, good evening. Why is anxiety at peak? It's always fun when I see your chat. In the first 2-3 minutes, I generally keep the video off so that I can read your chat. Someone will, despite having a doubt form, someone will write paragraphs of doubts here. Someone will say, sir, what about paid up capital? What about authorized capital when we have not started capital markets? Someone will say, please explain asset reconstruction company till I have not even explained what is asset reconstruction. So just relax, just take your time. Everything in due course. जो हो गया है, जो हो गया है, वो like the things that we have covered. For example, when we have covered employment, now is there any doubt of employment remaining? We have covered poverty. Now there is any doubt in poverty remaining? And it is, since all of those things are done, since once all those things are done, then your particular subject gets completed. है ना? अभी हमने ना बैंकिंग कंप्लीट किया है ना कैपिटल मार्केट्स कंप्लीट किया है. जब ये दोनों हो जाएंगे, इसके बाद कोई डाउट रिमेनिंग होगा तो फिर हम बात कर लेंगे. Now I will not take any doubts from the chat, so it would be better if you would not spam the chat. Now, before we start today, I have to discuss something important with you, right? मुझे एक बात बताओ. I mean, of course, a lot of you are going to give the prelims this year. Let's talk about this for a minute, then we'll come to whatever questions you have. Are you guys happy? आप खुश हो? I mean, I know this process is, it's a difficult, long, drawn out process. और उसमें क्या होता है, कभी कभी भी forget to just take a pause and look at ourselves. देखो, एग्जाम के बाहर भी बहुत बड़ी लाइफ है, right? Don't get, or it's very easy to say, it's very 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 difficult to implement, कि एग्जाम के बाहर की लाइफ को भूलना मत, right? Sometimes we think that we are giving this exam, we will stay in the room, हम अपने रूम में बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे, तब तक रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक किसी से बात नहीं करेंगे, till the time we don't clear the exam, right? And then you feel that once the exam is cleared, now I will feel happy, now I will feel that sense of completion, that sense of that happiness that has to come ultimately. This is independent of whatever you do in the exam. ठीक है? From my own experience, I'm telling you, जिस दिन आपका result आएगा, and I'm talking of final result, when you will clear this exam ultimately, the only thing you will feel is relief. आपको सिर्फ relief feel होगा, और वो भी temporarily, because the moment you get the result and your name is in the list, after seeing this, within 5 minutes your brain will think, what service? Which service am I getting? Do I have to give the exam again? What do I need to do, etc., etc.? If this is the service of your choice, let's say this is an all India service, then you will immediately, your brain will go to, what cadre will I get? What were the vacancies? मुझे अपना home state मिलेगा या नहीं मिलेगा? Even if all of this works out for you, that you get into the best all India service, आपकी मान लो choice IAS है, आप IAS में चले जाओ और आपको आपका home cadre भी मिल जाए. It is not true that everyone who is an IAS in their home cadre is happy, right? It is still possible कि
किसी का ये सब कुछ सच हो गया हो, इसके बाद देयर इज वन मोर डिस्कशन, व्हाट पार्टनर यू विल गेट. Even let's say this has come true as per whatever your demand or your expectations are, whatever you want in life, कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, ये सर्विस चाहिए, ये कार्डर चाहिए. When all of this comes true, even then there are so many people who are not happy. Why does this happen? There is something in philosophy called a hedonic treadmill. Has any of you heard this word before? Hedonic treadmill basically means that you are currently, let's say, running on this treadmill. It is going at 5 kilometers per hour. Okay. You will constantly want to increase this pace to 6 kilometers per hour. कि ये 5 की जगह 6 हो जाए. Because 5 now appears normal to you. You feel, although you are running, you feel that you are at a state of rest. कि 5 तो नॉर्मल जिंदगी चली रही है, 5 में क्या है? 5 is just everybody is running at 5. I should run at 6. The moment you start running at 6, the treadmill is now going at 6 kilometers per hour. You will see that there are so many people in the world who are also running at 6. So now after some time, you will feel happiness for some time when you get here. Then you will feel ये तो normal है, इसमें तो कुछ है ही नहीं. 6 kilometers per hour तो कोई बड़ी बात ही नहीं है. 6 kilometers per hour तो दुनिया चल रही है. I should run at 7. Then I should run at 8. Then I should run at 9. ऐसे करके even if you get to 60, you will still see that there are people who are at 61, who are at 62, who are at 63. You will never look back and see where you were. आप पीछे नहीं देखोगे. You will always keep looking ahead. And whatever state you are at currently, if you are at this state, you will feel this is normal. ये तो सब कर ही रहे हैं. Because you will either look at people who are at your level or people who are ahead of you. अपने से नीचे वालों को देखने की हमारी टेंडेंसी नहीं होती. Right? And this becomes the reason for constant lack of happiness. I also suffer from this. I think I am the biggest proponent or sufferer from this disease. I constantly think what next, और क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं, rather than realizing that it takes a lot of effort to even stay at 6 kilometers per hour, right? Or there are a lot of people whose dream it is to get to 6 kilometers per hour. So exam में भी यही है. Once you start preparing for this exam, in the starting you feel बस मेरे एक बार subjects cover हो जाए. जब आपके सब्जेक्ट्स कवर होने लग जाते हैं, आपको लगता है और अच्छे से हो जाए, फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, फिर मेरा मेंस क्लियर हो जाए, तब मैं खुश होऊंगा. मैं इंटरव्यू दूंगा तब मैं खुश होऊंगा. देन यू रियलाइज इवन इंटरव्यू इज समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. फिर आप सोचते हो इंटरव्यू दे दिया तो अब रिजल्ट आना चाहिए. देन दैट सेम ओल्ड प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. एंड लेट्स से देयर इज अ ब्रेक इन दिस प्रोसेस. दिस इज अ ह्यूज प्रोसेस फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, देन फॉर इंटरव्यू, देन टू द लिस्ट. पहले आपको लगेगा ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए. एंड एट सम पॉइंट, फॉर मोस्ट पीपल, एट सम पॉइंट दिस प्रोसेस विल स्टॉप. मे बी इट विल स्टॉप हियर. You will get selected but not get the service of your choice. It might stop here. You are able to appear in the mains but not able to clear the mains. It can stop here. There are people I know who have given 4 interviews in this exam, 5 interviews in this exam and not made it into the list. मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, try to keep them delinked as possible. जब हम जितनी जॉब करते हैं, when we are working, और I'm sure जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा when they are working, of course they are invested in their job. ऐसा नहीं है कि वो आराम से घर पे बैठे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे. They are invested, they are hard working, they go to work, they are earning ultimately money that is making your family sustain. But are they deriving happiness only from their job? No. Your parents will derive a lot of happiness from you giving them time, from you being an ideal son or daughter, from you spending time with them, from you respecting them. So the happiness that you derive should ideally not be
completely linked to this process. If it is completely linked to this process is never ending. मैं इसके आगे की प्रोसेस भी बता देता हूं आपको. प्रमोशन, पोस्टिंग, there is no limit to how long this process can go. So ये जो चीज है और ये जो चीज है, it is very important to realize that this happens, that it will constantly keep happening like this. So it is very, very important to delimit or to delink your progress in life from your happiness in life. Progress in life does obviously implement or does obviously lead to happiness. जरूर खुशी होती है जब हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, there is no doubt about it. But progress in life should not be the only thing that determines our happiness, right? एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, and this is I mean you might feel कि क्या बात कर रहा है, कुछ भी बोल के जा रहा है. It is my firm belief, from whatever small life experience I have, it is my firm belief that this is a choice. This is actually a choice you can take. You can choose to be happy even in the most adverse circumstances. You can choose not to be happy even in the best of circumstances. Sometimes it's beyond your control. Sometimes you can't really control it. But your outlook as to how you look at life, this really does matter. So try and delink this from this. इन दोनों चीजों को जितना आप delink करके रखोगे उतना अच्छा है. And how do you delink? Whenever you feel that it is getting too much, it's all about progress, and you are at this stage, take a look at someone who is not at your stage, who aspires to get to your stage. All of you, for example, have access to the internet. That is one fact I am sure about you, because आप यहाँ होते ही नहीं otherwise. Most people in the world, or not most, a lot of people in our country exist who do not have access to internet, who don't have a roof over their heads, who don't have 2 stable meals in a day. For them, your life is a dream life. For them, whatever you are at right now, it is a dream come true. हमने हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा देखा था. उसमें क्या लिखा था? To be in top 5% of urban India, you have to spend only 20,000 rupees a month. And this is at household level, not at personal level. If your household combined on food, utilities, petrol, education, everything spends more than 20,000 rupees a month, you are in the top 5% of India. So if you are in that position, अब 5% से ऊपर तो बहुत लोग हैं. There are people who probably spend 20,000 rupees in a day. There are people who spend 20,000 rupees in an hour also, right? But just take a look down sometimes. जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो गया, when you feel exam ये वो, just take a look at where you are. And how many people would actually love to get to this place? Look down. We always look up. Look up करने की तो हमारी tendency ही है. But sometimes take a minute to also look down and see what is happening in the world, right? And where you are. The privilege that you have, the privilege of being able to remove yourself from the labor force, not needing to do a job, and simply study. कि आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप simply बैठ के पढ़ सकते, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बैठ के पढ़ाई कर सकते हो. This is probably the biggest and best privilege in life. Your food is provided for, your house is provided for, your accommodation is provided for, your clothing is provided for, all your basic needs are taken care of, and it is said that you go and acquire knowledge, and you are being given this license that go and acquire knowledge. Recognize the importance of that privilege, and while you are recognizing the importance of that privilege, use it well, but also delink from the progress indicator. The fact that you have gotten here and the fact that you are here is a very big deal. Don't ever forget that. Just wanted to share that with you before we start the class today, so that just this thought came to my mind in the morning, so I thought I will just share with you for a minute. We'll now continue from where we left off yesterday.
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. Yesterday we were reading about banking. आज हम बैंकिंग को कंटिन्यू करेंगे. बैंकिंग में हमें काफी चीजें पढ़नी है. From banking only we will then gravitate to first understanding capital markets, because these are very linked topics. How they are linked you will understand. Then we will finish capital markets and then we will come back and finish banking. This process, when one small topic will be left here, we will then go to capital markets. Capital markets are going to be very interesting because I am going to teach you everything with regards to stock market. I will not give you any investing advice, or I am not, the better way is I am not going to give you any positive investment advice. I will tell you what to stay away from. I will not tell you what to invest in. ठीक है, but from telling you what to stay away from, I hope you will learn a lot. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आप में से किसी ने बैड बॉय बिलियनियर्स देखा? Did you watch the story of Sahara Shri? Did any one of you watch Bad Boy Billionaires? Did you see what that story was all about? What he did, what happened, and what it ultimately led to? If you did see it, एक दो एपिसोड जरूर देखना, मतलब just for fun, ऐसे कोई necessary नहीं है, but it will definitely increase your understanding about all of this. Now, कल हम ये पढ़ रहे थे twin balance sheet crisis, right? Yesterday we were reading this twin balance sheet crisis. I also told you to read up about the IL&FS crisis. Did you read up about IL&FS crisis? ये necessary है, ये करना है. Right? Did you read what happened in case of IL&FS? If somebody would like to give a summary as to what happened in the IL&FS crisis, you can write it in the chat. Basically, there are two linked firms, IL&FS and Dewan Housing and Finance Limited. Basically, it was nothing but the same policy paralysis leading to NPS, leading to non-completion of infrastructure projects, leading to a crisis in the economy. यही हुआ था broadly. This is the case. We don't need to go into the details. But broadly, the things that I was explaining to you yesterday about infrastructure, why infrastructure projects are difficult to execute. From there, the issues of IL&FS and DHFL also. Then the twin balance sheet crisis would also have been apparent to you. ऐसे आपको twin balance sheet भी समझ आया होगा, right? Now, कल हमने ये पढ़ा था. Now we are going to learn this new topic of banks when they give loans. हम NPS पढ़ रहे थे. When banks give loans, they take some collateral. है ना, बैंक लोन देता तो collateral लेता. Now from this collateral, what is this collateral? This collateral is ultimately a security. It is a security against this loan. How can bank now recover this loan? This is the crisis. This is the topic today. कि बैंक ने लोन दिया, continuing with the topic of banking risk, ठीक है? बैंक ने लोन दिया, bank took collateral from you, collateral becomes a security. Now, how can bank recover this loan? This is what we are going to understand today. ठीक है? For some reason, chat today is can't really stop the chat today. बहुत ही ज़्यादा messages आ रहे हैं chat में. So I will turn off the chat for a little bit, ताकि at least हम एक topic कर लें and then I'll turn it back on again. What I'll do is I'll open the class in front of me, ताकि अगर कोई disruptions हो तो दिक्कत ना हो. I will just turn off the chat for a bit. Now, देखो, हम ये पढ़ने वाले हैं कि बैंक्स ने ये जो कोलैटरल दिया है, how will they recover from this? इससे लोन रिकवर करना है. अगर मैं अपना लोन नहीं repay कर पा रहा हूं, I took 10,000 rupees as a loan, I gave my house as a collateral. Now bank has to recover this collateral from, or recover this loan from the security that they had. तो देखते हैं इसका क्या सिस्टम था. Let's look at historically what the system was and what has happened now. Earlier the system was under the Indian Contracts Act. बहुत पुराना लॉ है. इसमें क्या था ये देखेंगे. Then came a new act called the RDDB Act. इस एक्ट में क्या हुआ? We'll see what the recovery rate was.
Then once we read about RDDB Act, then we will read about this सरफेसी एक्ट. ये एक्ट को लाया गया और इस एक्ट को क्यों लाया गया? Even this was not successful, and finally we got something called Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This is 6. What is Insolvency and Bankruptcy Code? Now we will read all of this in a logical flow. From the historical background to today, we will understand कि IBC तक हम कैसे पहुंचे और IBC से क्या फायदा हुआ. Right? Now, originally there was something called the Indian Contracts Act. Indian Contracts Act में क्या कहानी थी? When bank is giving loan to you, bank is saying, this is bank, this is me. Bank says we will give you loan of 10,000 rupees. You will pay 10% interest for 2 years. As a security, we have your house. Now, this is an agreement between the bank and me. I have agreed to these terms. I have signed on these terms. And an enforceable agreement, an agreement that can be enforced in court, is a contract. So simple, this is an agreement and it can be enforced. Bank has the right to enforce this contract. So this was earlier governed under the Indian Contracts Act. In case I said I will not repay the money, मैं पैसे वापस नहीं दे रहा बैंक को, bank could go to court under Indian Contracts Act and say that देखो, we had this contract, this person is not repaying the money, we have this house available, please allow us to sell this house. Bank cannot directly sell my house. I have just given my papers. Bank does not become the owner of my house when I pledge my collateral to the bank. मैंने collateral रखा है बैंक के पास, security रखी है अपने घर की. But that does not mean that bank is automatically the owner of my house. I will still stay owner of my house. Right? Bank just has this in case of non-repayment. Now, somewhere, firstly, some legal authority will have to say that, yes, we have demonstrated that this person is not repaying. Now you can use this house and make your recovery. Right? For this, there was earlier the Indian Contracts Act. Under Indian Contracts Act, bank would simply go to court. When bank goes to court, bank would say, देखो, this was the original contract. This was the repayment. This person is not repaying. Therefore, please grant us the right to sell his house. Court would say, okay, you can sell their house. And then bank would recover its money. Now, what is the problem here? There were a lot of delays happening here. We all know about the judicial delays that happen in our country. So, lot of delays that were happening. ये एक बारी में ये काम नहीं हो पा रहा था. There were a lot of delays in this process. Then the other problem here was that these courts are dealing with everything. And this act is not only for loan contracts. This is for any sort of contract. किसी भी तरह का contract हो, this act is there. Right? So it's not only for the purpose of contracts that are related to loans. It is for the purpose of any sort of contract. Right? Now in this case, what was happening was that since it was for any contract, this act, anyone could go here. मान लीजिए मेरे आपके बीच में contract हुआ that I will teach you 20 classes. I don't follow my contract. You can go here. Right? So this act was not specific and courts were also dealing with a lot of cases. Not only the loan cases, so lot of delays happened. पहले इस चीज को समझते हैं. Why are delays such a problem? When the Kingfisher problem happened, Kingfisher का केस अब मैं आपको समझाता हूं. Kingfisher Airlines में क्या हुआ था? Kingfisher Airlines took lots of loans in 2009. 2009 में why did Kingfisher Airlines take loans? 2009 में they took loans to say that we will buy new aircraft. Indian economy in 2009 was growing at 8.5%. Indian economy is rapidly growing. As Indian economy grows, people will use more and more air travel. We will buy these new aircraft and then we will meet that demand. For this, they took a loan. This was the case of Kingfisher Airlines. Right? Fraud को अभी side करते हैं. The fraud that Vijay Mallya did, will just put that aside. Global financial crisis happened and people stopped traveling.
people stopped traveling in aircrafts as much as they were supposed to. जो projection थी, जो मेरी future expectation थी, वो expectation का mismatch हो गया और उतना air travel नहीं हुआ. Now it became clear that Kingfisher Airlines will not be able to repay its loans. Because the economy was in a slowdown, there was a global financial crisis, everyone was sure that Kingfisher Airlines will not be able to repay their loans. This was the position in 2010. 2010 tak this thing was pretty clear that Kingfisher is going to crash. The loan amount taken by Kingfisher for this process was 4,500 crores. Approximately, I'm not sure of the exact figure, something to this tune. Now, if in 2010 it was clear that no repayment can happen, if banks would have gone and recovered in 2010, they probably would have been able to recover 4,000 crores. Because obviously, what is the asset now with Kingfisher? आप क्या बेच सकते हो Kingfisher का? What is the collateral here? Collateral would have been these aircraft and the other assets of Kingfisher Airlines, other aircraft that they have, their business. Loan is not by Vijay Mallya, loan is by Kingfisher Airlines, the company. Company की क्या assets हो सकते हैं? Aircraft, the various assets that they own. Maybe they had some hotels, some aircraft hangars, the business that they had. 2010 में आज भी these aircraft, the new aircraft they had bought, they were just 1 year old. अभी ये 1 year old है. आपने 4,500 करोड़ के एयरक्राफ्ट खरीदे, एक साल बाद आप उनको बेचने जाओगे तो they can still be sold for a decent value. तो अगर आज बैंक से डिसीजन ले लेते 2010 में and the judicial process did not have any delays, तो 2010 में रिकवरी होती तो 4,000 करोड़ वापस आ जाते. और इंटरेस्ट भी 2009 का 4,500 करोड़ का लोन है, इंटरेस्ट कितने साल का लगता? 1 ईयर का इंटरेस्ट लगता. तो लेट्स से 4,500 करोड़ ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एट 10%, सो 450 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट. तो टोटल जो बैंक को रिकवरी करनी थी वो 4,950 करोड़ होती एंड एक्चुअल बैंक कितनी कर पाता इस साल टाइम पे? 4,000 करोड़ रिकवर कर लेता. सो टोटल लॉस वुड हैव बीन 950 करोड़, नॉट मोर देन दैट. इतना ही लॉस होता अगर 2010 में हो जाता. Why did recovery not happen in 2010? Because of delays, because of not having a good process, because of the fact that there could be stay orders. Banks were also wary. Banks को भी लगा क्या पता रिकवरी हो जाए, हम अभी से इनके पीछे पड़े, right? Ultimately, when recovery happened, a long time passed. Recovery happens close to 2017-18. In 2017-18, what is the value of these aircraft? अब तो ये 7-8 साल पुराने हो गए, जंग लग गया इन पे. They have become almost, nobody will call them new aircraft now. In 2017-18, when recovery happens, the amount owed to bank is 4,500 crores. ये तो principal amount as it is. Interest and some penalty of not repaying the interest. Total amount that banks now have to recover is 7,000 crores. Interest is also piling up, penalties are also piling up. 2017-18 में 7,000 करोड़ रिकवर करने हैं. Now banks actually sell the assets. And at this time, what is the actual money that is recovered? 500 crores is recovered. So look at the extent of loss of the bank. इसमें जो भी fraud हुआ उसको वो तो है ही, that is of course a major factor. But look at the extent of loss of the bank. If this was the time when recovery was done, within 1 year, about 900 crores would have been lost. Now, 6,500 crores are lost. So almost 7 times the loss has increased because of this delay. So in the case of recovery from loans, the key factor is time. You have to recover the loan in good time. If you don't recover it in good time, it will not ever lead to the realizable value, right? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिले होना हमें समझ आ रहा है क्यों होता है. बिकॉज कोर्ट में नॉर्मल प्रोसेस है, द डिले विल हैपन एज इफ इट हैपेंस इन एनी अदर कोर्ट. देन दिस प्रोसेस वाज रियलाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में रियलाइज हुआ कि डिले की बहुत मेजर प्रॉब्लम है. देन अ न्यू एक्ट वाज पास्ड.
This was RDDB Act, Reduction of Debt Due to Bank Act. This was passed in 1993. Under this act, two types of special courts were set up. When you read polity, you will read about these special courts. जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ लिया होगा. These special courts are called tribunals. What are tribunals? You will understand this जब आप polity पढ़ोगे. डिटेल, बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना होता है. मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं polity में. For now, we can understand that tribunals are specialized courts. अगर आपको आता है तो then it's okay. Two tribunals were set up. One was called Debt Recovery Tribunal. One was called Debt Recovery Appellate Tribunal. ये दो ट्राइब्यूनल सेटअप करे गए अंडर दिस एक्ट. And then it was said that if banks have to go and recover debt, Debt Recovery Tribunal and Debt Recovery Appellate Tribunal are the two main tribunals where you will go. So what we did was we created a specialized court that all banks can go here, and this court will only look into debt recovery. ये और कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ debt recovery का काम करेगा. So one of our problems gets solved by the creation of Debt Recovery Tribunal. We create Debt Recovery Tribunal. अगर आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं हो, यू कैन अपील टू डेट रिकवरी अपेलेट ट्राइब्यूनल. यहां भी खुश नहीं हो तो यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज एनविजन्ड. नाउ दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट. Now since it is a specialized court, it will be able to solve the problems, right? But abhi bhi the process of judicial delays was not solved. थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, बट प्रोसेस तो अभी भी कोर्ट वाली है. कोर्ट में आपको पता है तारीख पे तारीख, वन आफ्टर द अदर dates will be given. Generally delays happen because courts have to be very meticulous and thorough. Every evidence is examined. Sometimes people don't show up. A lot of things can go wrong in a court of law, and that leads to judicial delays. So abhi bhi problem solve nahi hui. Then a new act was passed. Realizing this problem, a new act was passed, and this was called the SURFACI Act. I know आप लोग chat नहीं कर सकते हो, but एक बार guess करना that by this time, till these two acts were running, SURFACI had not come. What was the general recovery rate from a non-performing asset? Till SURFACI Act had not come, the recovery rate of a non-performing asset of a bank was 2%. 100 रुपए का लोन है, एनपीए अगर बन गया तो 2 रुपए ही रिकवर हो पा रहे थे. This was the condition at this time. Then came SURFACI Act. Let us read the full form of SURFACI Act first. SURFACI Act की full form ये है. We will understand each of these words separately. हम ये सारे words separately समझेंगे. SURFACI Act stands for Securitization, Asset Reconstruction of Financial Assets, Asset Reconstruction of Financial Assets, and Enforcement of Security Interest Act. SURFACI Act. ये तीन अलग चीजें हैं. One is securitization, one is asset reconstruction of financial assets, one is enforcement of security interest. ये एक्ट पास करी गई. Let us look at what were the features under this act. इन तीनों वर्ड्स को, इन तीनों चीजों को अलग से समझते हैं. Securitization. Security. अभी तक हमने देखा था what was the meaning of the word security. Bank has given loan to me. I have given collateral. This collateral is security for the bank. Security is a noun. Verb for this would be securitization, bringing this security into action. यहां पर क्या कर सकता है बैंक? Now understand this very carefully. Bank has given loan to me. I have given security to the bank. Bank now holds this security in case I don't repay. Bank has this security in case I don't repay. Securitization means, let's say this collateral is my house ke papers, my house papers. This is the collateral. Bank can say that we hold these house papers.
we are giving these house papers as collateral to someone else, to let's say another bank, and we are taking a loan. Now they have brought this security into action. How this happens we'll understand today only. आज ही समझेंगे ये कैसे हो रहा है. ये कोलैटरल था, मेरे हाउस के पेपर्स थे बैंक के पास. बैंक ने अब वो हाउस के पेपर्स आगे, अभी एनपीए नहीं हुआ लोन, अभी लोन इज नॉर्मल, लोन इज स्टिल नॉर्मल, आई एम रीपेइंग. बैंक कैन नाउ ब्रिंग माय सिक्योरिटी इनटू एक्शन, यूज दिस कोलैटरल हियर एंड देन गेट अ डिफरेंट लोन. मैं तो रीपे करता ही रहूंगा, माय लोन विल नॉट चेंज, collateral is still there, but bank can now move this security from one place to the other. जब हम कैपिटल मार्केट्स पढ़ेंगे कल, then I will tell you the detailed story of the 2008 global financial crisis. In that, this process of security obligation, this process of securitization, of moving securities from one place to the other, this was the major reason, excess securitization was the major reason for the global financial crisis. How this happened, इसको हम देखेंगे. Now, just giving you a small, preview trailer of what happened. बैंक ने एक लोन तो किया नहीं हुआ. बैंक हैज गिवन लोन्स टू 10 पीपल. बैंक ने होम लोन दिया हुआ है 10 लोगों को. These 3 are repaying properly. These 3 are repaying, but there are some defaults. These 3 are completely defaulting. Bank has securities of all of these people. सबके घर के पेपर बैंक के पास है. बैंक विल क्लब ऑल ऑफ दीज सिक्योरिटीज. जितने ये बैंक के पेपर्स हैं, जितने ये घर के पेपर्स हैं, इन सबको क्लब करके बैंक विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. ये क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रीव्यू इनटू इट. बैंक ने सबके घर के पेपर लिए, सबको साथ में क्लब कर दिया और कहा कि देखो ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, इसमें मोस्ट लोग बहुत अच्छे से रीपे करते हैं, एक आधे डिफॉल्ट है. बैंक लाइड एंड बैंक सेड दैट मोस्टली दिस सिक्योरिटी इज पेइंग वेल. हम इसको केस को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं. लेट्स से आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल आर रीपेइंग प्रॉम्प्टली. हियर देयर इज 2 डिफॉल्ट्स ओनली. 2 लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, बाकी सब रीपे कर रहे हैं. बैंक ने सारों को साथ में करके एक अलग सिक्योरिटी बना दी एंड उसको कहीं और देके एक लोन ले लिया. This is the meaning of the word securitization. I am not teaching you securitization yet. I will teach it when we do capital markets tomorrow. But securitization word ka meaning, putting this security into action. This is the first aspect of SARFAESI Act. Second aspect, asset reconstruction. What is the asset for the bank? क्या है SARFAESI Act में? Asset reconstruction of financial assets. What is the asset for the bank? बैंक के लिए asset क्या है? Loan is the asset. Through SARFAESI Act, we gave bank the right that you can renegotiate your loan terms. आप कह सकते हो कि I had given you a loan of 10,000 rupees at 10% interest for 2 years. You are currently unable to repay this. We will give you something called moratorium. Moratorium means don't repay for 1 year. 1 साल तक कोई repayment मत करना. 1 साल बाद you repay same terms. या हम आपका interest rate भी कम कर सकते हैं, principal भी कम कर सकते हैं. Bank is allowed to do asset reconstruction. Bank is now allowed to have new terms or structure of the loan. Before SARFAESI Act was passed, what would this actually be? This would be a new contract. Old contract was this. New contract would be this. Before SARFAESI Act was passed, even for this, bank had to go to court. Because contract आप change कर रहे हो, court में जाओगे, दोनों parties agree करेंगी. Here we recognize the rights of the banks. हमने बैंक के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया थ्रू SARFAESI Act बिकॉज रिकवरी हो ही नहीं रही थी. सो वी सेड दैट बैंक इज अलाउड टू रीनेगोशिएट, रीस्ट्रक्चर इट्स लोन ऑन बाय इटसेल्फ. अगर बैंक को लगता है कि ये नहीं रिकवर हो रहा तो
बैंक रीस्ट्रक्चर कर सकता है, रीनेगोशिएट कर सकता है, नई टर्म्स ला सकता है. बैंक कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल एसेट. एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यहीं से आएंगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. ओके, दिस वाज अलाउड. बैंक कैन नाउ, however the bank wants, bank can change the structure of their asset, bank can change the structure of this contract in case of repayment, in case of lack of repayment. अगर एनपीए बन रहा है, बैंक कर सकता है कि इसको रीस्ट्रक्चर कर ले, रिकंस्ट्रक्ट कर ले, जैसे चाहे चेंज कर ले. From here, from this idea of asset reconstruction of financial assets came the concept of asset reconstruction companies. All asset reconstruction companies, नाम में कंपनी है, कोई भी कंपनी होती है, सारथी आईएएस इज अ कंपनी. कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. ये भी रजिस्टर होंगी अंडर कंपनीज एक्ट. दे आर एन एनबीएफसी, बैंक तो नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, बट देयर स्टैट्यूटरी बैकिंग, हाउ आर दे अलाउड टू फंक्शन, दिस बैकिंग comes from the SARFAESI Act. Now let's see what sort of restructuring bank did. Bank has given loan to me for 10,000 rupees at 10% rate of interest for 2 years. I have not been repaying. It has been 4 years. And bank has seen that I am not going to repay this loan. Bank को लगता है हम इससे कोई value recover नहीं कर पाएंगे. Now, bank की expertise नहीं है. Let's say I had taken this loan for my business. मैंने ये लोन अपने बिजनेस के लिए लिया था. जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था, आई हैव टेकन अ लोन फॉर माय शॉप, आई हैव टेकन दिस लोन फॉर बिजनेस, आई हैव टेकन दिस लोन फॉर एजुकेशन. बैंक डज नॉट हैव एक्सपर्टीज इन दिस. बैंक ऑल्सो डज नॉट हैव एक्सपर्टीज इन रिकवरी ऑफ लोन. बैंक की रिकवरी में भी एक्सपर्टीज नहीं है. बैंक की एक्सपर्टीज है लेंड करने में, रिकवर करने में नहीं है. बैंक का ये एसेट कितने का है? 10,000 रुपीज का लोन है बैंक के पास, जो बैंक का एक एसेट है. लेकिन बैंक ने देखा कि यार इससे तो कोई भी रिकवरी नहीं हो पा रही. वन वे इज टू रिकॉग्नाइज दिस लॉस, दैट ओके वी हैव लॉस्ट 10,000 रुपीज एंड अब जो होगा देखा जाएगा. द अदर वे इज दिस लोन इज एन एसेट फॉर द बैंक. बैंक कैन सेल दिस एसेट टू समवन एल्स. Bank will sell this asset to someone called asset reconstruction company or asset management company. Same thing. Asset reconstruction company क्या कहेगी? Asset reconstruction company is specialized in recovery. They are specialized in recovery of loans. इनका काम ही है लोन्स को रिकवर कराना. जैसे लेट्स से आपने सुना होगा गांव में इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं. They give loans at very, very high rate of interest. When you are unable to pay that loan, do they themselves come and ask for loan? No, because they don't have recovery expertise. They will send some muscle men who will beat you up and then recover loan from you. Those muscle men have expertise in recovery. Similarly, bank is now selling its asset to the ARC and saying, you recover it. बैंक कहता है मैंने 10,000 रुपए का लोन दिया, मेरे को कोई रिकवरी नहीं हुई. दिस पर्सन हैज नॉट इवन रीपेड अ सिंगल रुपी टू मी. दिस एसेट वाज वर्थ 10,000 बट एक्चुअली कोई रिकवरी हो नहीं रही है. सो बैंक विल से आई विल सेल दिस टू द एआरसी फॉर लेट्स से 2,000 रुपीज. नाउ दिस फिगर ऑफ 2,000 विल बी अग्रीड बिटवीन बैंक एंड एआरसी. ये आपस में डिसाइड करेंगे. हाउ विल एआरसी अग्री ऑन दिस फिगर? ARC will think how much can I ARC will first examine my case. ध्यान से मेरे assets देखेगा, मेरे ऊपर स्टडी करेगा एंड देखेगा how much can I actually recover from this person. इनके assets बेच के, इनसे पैसे निकलवा के, इनको धमका के, डरा के, of course that does not happen, just giving you an idea कि कितने पैसे रिकवर करे जा सकते हैं. ARC thinks, it is ARC's estimation, since it is specialized in recovery, ARC thinks I can recover rupees 3,000 from him. So what will happen? ARC will buy this loan, buy this asset from the bank for 2,000 rupees. Bank will get 2,000 rupees. Bank को तो अभी कुछ नहीं मिल रहा था. Bank को 2,000 rupees मिले. Sure, bank still has had a loss of 8,000, but loss of 8,000 is better than loss of 10,000.
Asset reconstruction company will buy for 2000 and then they will try to recover this. It is their estimation they will be able to recover this. Then they will recover 3000 rupees and they will make a profit of 1000 rupees. But there is a problem here. सबसे पहले तो ARC should be able to recover this money. And the business of ARC, ये business, one, it is capital intensive. You need a lot of money. Normally loans are not of this size. Loans run into crores, 500 crores loan, 10,000 crores loan. You are buying a bad loan. Of course, if it is a 10,000 crore loan, you will buy it for 2,000 crores. आप बहुत कम वैल्यू पे खरीद रहे हो उसको. But आपको you need money up front. आपको पहले से पैसा चाहिए तभी आप ये खरीद पाओगे बैंक से. Even if it is at less value, you need money up front. Second, you need a lot of expertise. You need to be expert in recovering money from these loans. Only then you will be able to buy. So, because of this, big loans were still not being purchased by ARCs. रिपीट करता हूं क्या पढ़ रहे हैं. सरफेसी एक्ट पढ़ रहे हैं. सरफेसी एक्ट में हमने सिक्योरिटाइजेशन समझा, फिर हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ये समझा. एसेट रिकंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज करती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. व्हाट हैज बैंक डन हियर? बैंक हैज रिकंस्ट्रक्टेड इट्स फाइनेंशियल एसेट. It has sold its financial asset to a different company, and now this company, which is specialized in recovery, this is now going to recover this money from me. Whatever the original value of this asset was, original value was 10,000 rupees. Bank has sold this at a very small value because bank सोच रहा है कि कुछ तो रिकवर हो. तो 2,000 rupees में ARC ने खरीदा. ARC now will try to recover. If they are able to recover more than 2,000 rupees, they will get a profit. Problem with ARC is that ARC require lot of money upfront. 10,000 करोड़ का भी लोन हो सकता है, तो ARC को पहले ही 2,000 करोड़ देने पड़ेंगे. Recovery is uncertain. Recovery is later expectation. तो ARC is very capital intensive business. बहुत पैसा चाहिए. Second, expertise भी बहुत चाहिए. जो बंदा इतना ढीठ है कि वो लोन रीपे नहीं कर रहा, me in this case, उससे आपको 3,000 रुपए रिकवर करने. So you need to be a really expert in recovery of loan. This was the business of ARCs that started after SARFAESI Act was passed. Now ARCs started this process of loan recovery. But since it was capital intensive and a lot of expertise was required, ARCs or no ARC was actually buying big loans. छोटे मोटे loans वो खरीद लेते थे, but no ARC was coming forward and buying big loans. This was the problem. अब पहले बताओ कि इतनी बात आपको समझ आई है? Is this much so far clear to you? I will keep the chat on if you remain disciplined. अगर आप नहीं रहोगे disciplined तो I will वापस मैं chat off कर दूंगा. ठीक है. अब एक बार दोबारा एक्चुअली चैट ऑफ करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू टीच यू. बंद ही कर देते हैं. यू राइट. ओके. नाउ ARC started buying the NPAs from banks. बैंक का एसेट है, बैंक चाहे किसी को बेचे. बैंक ने एसेट ARC को बेच दिया. ARC started buying this. But the problem was business was capital intensive. Lot of expertise was required and I am sure you can understand that the business was also risky. एक risky business है ये. अगर रिकवरी नहीं हुई तो आपने तो 2,000 रुपए दे दिए. What if there is no recoveries? So nobody was buying the big NPAs in the banks. और बैंक में काफी सारे उस टाइम पे banks had a lot of big NPAs. Even today the problem of NPAs in banks is huge. There was a time when 17% loans of public sector banks were NPA. This is huge number. Bank will lend out 100 rupees, 17 rupees will never come back. This could have led to a bank run like situation. This was the case in 2015-16. तब एक एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, वो भी हम देखेंगे.
So very high number of NPAs are there, but no ARC is coming forward to actually buy this. तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है that we will set up our own ARC, whose name was NARCL IDRCL, also known as bad bank. अब ये जो वर्ड है बैड बैंक, दिस इज व्हाट जर्नलिस्ट यूज. इसका नाम बैड बैंक नहीं है, इट इज नॉट अ बैंक, ये है एआरसी ही. बैड बैंक बस जर्नलिस्ट यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई दिस टर्म. व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बैड बैंक? क्या सोचा गया? ये सोचा गया बैंक में बहुत सारे एनपीएस हैं. जो बैंक यहां पर कौन सा है? नॉर्मल बैंक, लेट्स से एक्सिस बैंक, एसबीआई. देयर आर लॉट ऑफ एनपीएस. जब एनपीएस ज्यादा होते हैं बैंक में तो क्या होता है? प्रोविजनिंग ज्यादा होती है. When too much provisioning is done for one particular loan, capital adequacy ratio is also there, provisioning is also there. अगर एक बैंक का एनपीए नंबर बहुत ज्यादा हो गया और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स 100% हो गई, तो बैंक को बहुत सारा कैपिटल प्रोविजनिंग में देना पड़ेगा. जब प्रोविजनिंग में देना पड़ेगा तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं होगा. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो बैंक आगे लेंडिंग नहीं कर सकता, राइट? So credit creation was getting slowed down. There was a slowdown in credit creation because बैंक के पास एनपीए है, बैंक को प्रोविजन करना पड़ रहा है, बैंक फर्दर लेंडिंग नहीं कर पा रहा. दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द बैंक. और एआरसीज जो हैं, जो नॉर्मल एआरसीज हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, दे आर नॉट बाइंग दीज लोन्स बिकॉज दे आर टू बिग. बहुत बड़े लोन्स हैं, एआरसीज आर स्केर्ड. So government said we will make a National Asset Reconstruction Company Limited, NARCL. This NARCL will buy NPAs from banks. अभी ARC यही काम कर रही थी, NPA खरीद रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद रही थी. नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीदेगी फ्रॉम द बैंक. एट व्हाट वैल्यू विल इट बाय? जैसे हमने देखा था केस के 10,000 का लोन इन्होंने 2,000 में खरीदा. The value will be agreed upon between bank and NARCL. NARCL का काम है बैंक के साथ बैठना, लोन की कंडीशंस देखना और देखना कि किस वैल्यू पे इसको खरीदना चाहिए. ये 10,000 रुपए का लोन है, लेट्स से मेरे को लगता है मैं इससे 2,000 रुपए रिकवर कर सकता हूं, देन आई विल बाय इट एट लेसर वैल्यू देन 2,000. मुझे लगता है मैं 5,000 रुपए में रिकवर कर सकता हूं तो मैं 4,000 का खरीदूंगा. सो NARCL's job is to assess how much recovery is actually possible, and on the basis of that decide a value at which this NPA has to be purchased from the bank. Then this NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited, will transfer this NPA to another company called IDRCL, Indian Debt Reconstruction Company Limited, right? When this NPA is transferred, this IDRCL, it is an asset management company. इसका काम actually recovery का है. The IDRCL will do the actual recovery. They will assess and tell IDRCL what to do. IDRCL will do actual recovery. How can they do recovery? They can sell the collateral, they can restructure the loan, they can auction off my property, whatever they want to do, right? Ab, what is the deal here? Let's say loan was originally of 10,000 rupees. NARCL says that we will buy this for 2,000 rupees because we think 3,000 rupees can be recovered from this. NARCL का काम था assessment का. NARCL ने assessment करके बोला that we will buy this for 3,000 rupees because this loan we feel we will buy this for 2,000 rupees because we feel we can actually get 3,000 rupees from this. हम यहां से 3,000 रुपए निकाल सकते हैं तो 2,000 रुपए का खरीदेंगे, 1,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. Whatever money has to be given here, 2,000 rupees has to be given. NARCL will not give 2,000 rupees upfront. एकदम से NARCL नहीं देगा 2,000 rupees. यही तो प्रॉब्लम थी, पहले पैसे देने पड़ रहे थे. If you give money early and later you are unable to recover, then you fail. That was the problem. That is why nobody was buying. तो यहां पर एक नया सिस्टम लाया गया. बैंक से हम 2,000 रुपीज में खरीदेंगे, एनपीए लेंगे एंड बैंक को 2,000 रुपीज हमने देने.
इन 2000 रुपीज में से ओनली 15% विल गो एज मनी, 85% will go as security receipt. 15% will go as money, 85% will go as security receipt. Security receipt का क्या मतलब है? जब हम इस security से recovery कर लेंगे, when we will recover money from the security. Security क्या है यहां पे? Collateral. When we recover money from the collateral, we will receive some money. From this receipt we will pay you later. जब रिकवरी हो जाएगी तब हम आपको पे करेंगे, अभी हम आपको सिर्फ 15% दे रहे हैं. तो लेट्स से आपको 2000 रुपए हमने देने, 300 वी विल गिव यू नाउ, द रिमेनिंग 1700 वी विल गिव वंस वी रिसीव मनी फ्रॉम दिस सिक्योरिटी. ये हुआ. अब NARCL के पास है एनपीए. NARCL विल नाउ गिव दिस एनपीए टू IDRCL एंड इनके आपस में देयर विल बी समथिंग कॉल्ड अ डेट मैनेजमेंट अग्रीमेंट. आपस में एक डेट मैनेजमेंट अग्रीमेंट होगा कि ये जो डेट है, ये जो एनपीए है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा. इसमें NARCL IDRCL को बताएगा दैट दिस इज आवर असेसमेंट, दिस इज हाउ द रिकवरी कैन हैपन, बिकॉज इनका काम मेनली असेसमेंट का है, इनका काम एक्चुअली रिकवरी का है. IDRCL अब क्या करेगा? IDRCL अब रिकवरी स्टार्ट करेगा फ्रॉम दिस लोन. वहां what was the security here? My house was the security. तो IDRCL can come to me and say, see, we are giving you one last chance, we are restructuring your loan. अगर IDRCL को लगता है this is not good enough, they will directly sell my house or auction my house and recover money. अब जो पैसा आया, let's say after selling my house, 3000 rupees were recovered. From this, you have already paid 300 to the bank, 85% is left, 1700 जो रिमेनिंग बैलेंस था वो आप अब पे करोगे, एंड बाकी 3000 आपने पहले दिया, 1700 आपने बाद में दिया. You can keep 1000 rupees as your profit. Now one question arises, what happens if this recovery actually does not lead to this sort of money? हमने तो ये अज्यूम किया था, या NARCL ने ये अज्यूम किया था कि मेरी जो सिक्योरिटी थी, मेरा जो कोलैटरल था, मेरा जो हाउस था, असेस किया था कि इससे 3000 रुपीज एक्चुअली कैन बी रिकवर्ड. बट जब एक्चुअल रिकवरी होती है तो पता चलता है दैट ओनली 1500 रुपीज आर रिकवर्ड. अब क्या? नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ यू हैव ऑलरेडी पेड टू द बैंक 300 रुपीज. You still have to pay to the bank 1700 rupees. ये तो अग्रीमेंट हो चुका है पहले, इससे तो आप बैकआउट नहीं कर सकते. आप रिकवर कर पाए 1500, आपको मिनिमम 2000 तो रिकवर करने थे. 300 आप पहले दे चुके हो, तो आपके पास बचे कितने हैं? यू आर लेफ्ट विद 1200 ओनली. यू हैव टू गिव द बैंक 1700. सो नाउ देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 500 रुपीज. एसेट वॉज एक्चुअली यू have bought this loan for 2000, तो आप मिनिमम 2000 की तो रिकवरी करो. आपने 1500 की रिकवरी करी. आप खुद प्रॉफिट ना कमाओ, दैट्स ओके, बट आप बैंक को तो अभी 500 रुपीज और देने. हु विल पे दिस 500 रुपीज? गवर्नमेंट विल पे दिस 500 रुपीज टू दिस बैंक. गवर्नमेंट विल पे दिस 500 रुपीज. दिस थिंग इज रिटन एज सॉवरेन गारंटी. सॉवरेन मीनिंग, सॉवरेन इज द इंडियन गवर्नमेंट. सॉवरेन वर्ड का मतलब हम समझेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे. सॉवरेन गारंटी ऑन सिक्योरिटी रिसीट शॉर्टफॉल. इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स, देन व्हाट वाज ओरिजिनली असेस्ड, गवर्नमेंट विल रीपे दैट शॉर्टफॉल. हुज मनी डज द गवर्नमेंट हैव? गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया? पब्लिक विल गिव टैक्स टू गवर्नमेंट. This further will be given to bank. एनपीए की गलती किसकी? बैंक की. अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? पब्लिक. This sort of thing, when households are made to pay for corporate mistakes, are called financial repression of households. You are repressing households for mistakes that they have not made. पहले बैंक ने हमारा ही पैसा लेके लोन दिया,
और अब मैं ही टैक्स देके बैंक को उनके एनपीएस जो उन्होंने गलतियां करी हैं उनको मैं उनको पैसे दूंगा. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ हाउसहोल्ड्स. इज दिस क्लियर? अभी हमने आगे एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, हमें सिर्फ बैड बैंक पढ़ा है. इज दिस क्लियर? आई एम श्योर आपने आज से पहले भी सरफेसी एक्ट और बैड बैंक पढ़ रखा होगा कई लोगों ने, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट नाउ यू माइट हैव गॉटन द क्लैरिटी ऑफ व्हाट एक्चुअली इट इज. ये एक्चुअली क्या है, आई एम श्योर नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. So now let's move forward. I'm closing the chat again. अब दोबारा आगे चलते हैं. सरफेसी एक्ट में तीन चीजें थी. वन वॉज सिक्योरिटाइजेशन, वन वॉज एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जिससे हमने देखा समथिंग कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सेम ही चीजें. देयर इज सम डिफरेंस, वी डोंट नीड टू स्टडी इट फॉर आवर एग्जाम. एआरसी एएमसी बनी, और हमने इसमें क्या देखा, यहां पर एक बनता है कुछ समथिंग कॉल्ड अ बैड बैंक. अब तीसरी चीज देखते हैं ऑफ सरफेसी एक्ट कॉल्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. मेरी जो सिक्योरिटी थी, बैंक लोन टू मी, आई गिव collateral as my house which was a security. If I was unable to repay, bank now has an interest in this security. Interest not of loan interest, interest जो हम कहते हैं, I have an interest in playing chess, I have an interest in horse riding. Bank now has an interest in this security कि इस सिक्योरिटी को हम सेल करें और रीपे करें, अपना रिकवरी करें. बैंक को अर्लियर इफ बैंक वांटेड दैट इट विल सेल माय हाउस, उसे कहां जाना पड़ता था, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता था. नाउ वी सेड दैट इन दिस केस, यहां पर बैंक क्या कर रहा है, बैंक इज एनफोर्सिंग The interest it has in my security. बैंक को एक इंटरेस्ट था इस सिक्योरिटी को सेल करने में. इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन चेस, उस वैसा इंटरेस्ट था इसको सेल करके रिकवरी करने में. बट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट, बैंक हैड टू अर्लियर गो टू कोर्ट. नाउ वी सेड देयर इज नो नीड टू गो टू कोर्ट. बैंक्स कैन ऑटोमेटिकली एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट. इफ अ लोन बिकम्स एनपीए, इफ बैंक thinks that person is not repaying, अभी हम डिटेल्स में नहीं जाते कि कब बैंक सेल कर सकता है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. देयर आर सम डिटेल्स, व्हेन कैन बैंक एक्चुअली सेल, एट व्हाट टाइम कैन बैंक नाउ एनफोर्स इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उन डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. बैंक को पहले अगर ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना था तो बैंक को जाना पड़ता था कोर्ट. नाउ वी आर सेइंग बैंक्स कैन एनफोर्स दिस सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय देमसेल्व्स. तभी ये क्या हो रहा है, दिस सेलिंग ऑफ माई एसेट, दिस ऑक्शन ऑफ माई एसेट, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एक्चुअली एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. समवन हैज अ इंटरेस्ट इन माई सिक्योरिटी टू सेल इट ऑफ, टू रिकवर द मनी दे हैव गिवन मी. इसको एनफोर्स करने के लिए पहले कोर्ट जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा. सो द होल आइडिया ऑफ द सरफेसी एक्ट वाज दैट वी विल recognize the rights of banks and we will not make them go to court for every small thing. तीन चीजें हैं इसमें, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. बैंक्स कैन नाउ टेक पोजेशन ऑफ माय हाउस. और भी तरह की सिक्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे कि मेरा बिजनेस सिक्योरिटी है, कंपनी ने अपने बिजनेस के अगेंस्ट लोन लिया है, तो बैंक्स कैन नाउ टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी. बैंक्स कैन एनफोर्स दिस सिक्योरिटी इंटरेस्ट without needing to go to court.
तीन चीजें हुई, सिक्योरिटाइजेशन, बैंक्स कैन मूव दिस सिक्योरिटी, ब्रिंग इट इनटू एक्शन, गेट सम अदर लोन. बैंक्स कैन डू एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बैंक का जो फाइनेंशियल एसेट है, लोन है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई, उनको बेच सकते हैं. और बैंक्स अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट खुद एनफोर्स कर सकते हैं बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ वट एवर सिक्योरिटी आई हैव गिवन, टेकिंग ओवर मैनेजमेंट, सेलिंग इट, ऑक्शनिंग इट. इन सब कामों के लिए बैंक को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. क्या प्रॉब्लम थी मेन? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉब्लम? टाइम ज्यादा लग रहा है. टाइम ज्यादा लगेगा तो बैंक की रिकवरी नहीं होगी. टाइम क्यों लग रहा था? क्योंकि हम कोर्ट में जा रहे थे, और क्योंकि हम कोर्ट में जा रहे थे, टाइम लग रहा था, तो बैंक रिकवरी नहीं कर पा रहा था. हमने बैंक को कहा आप ये सारे राइट्स खुद ही एनफोर्स कर लो, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. वी आर गिविंग यू दिस लाइसेंस टू ऑपरेट एंड एनफोर्स योर राइट्स. टाइम टेकन विल बिकम स्मॉलर. So ideally, after passing of SARFAESI Act, the recovery rate should increase. देखते हैं क्या हुआ. Before SARFAESI Act was passed, recovery rate of bad loans of NPAs was 2%. After SARFAESI Act was passed, recovery rate became 10%. So 5 times increase in recovery rate happened because of SARFAESI Act. दो चीजें यहां पर SARFAESI Act की इंपॉर्टेंट हैं. पहले तो ऑब्वियसली इट विल ओनली बी ऑन सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन मतलब जिस लोन पे कोलैटरल मिला है. जो लोन सिक्योर्ड ही नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी ही नहीं है, वहां तो SARFAESI एक्ट आएगी नहीं. सेकंड, इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स. SARFAESI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स, इट इज अवेलेबल ऑन सिक्योर्ड लोन्स. ठीक है. नाउ पोस्ट SARFAESI एक्ट, SARFAESI एक्ट से पहले रिकवरी रेट था 2%, पोस्ट SARFAESI एक्ट इट बिकेम 10%. Then we started to compare with the Western countries. Western countries में recovery rate was close to 70%. तो हमने देखा अभी भी बहुत मेजर गैप है. Despite SARFAESI Act, there is a huge gap. Why? Main factor क्या है? Time. Even when SARFAESI Act was implemented, अभी भी तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोर्ट जाके इसके अगेंस्ट एक स्टे ऑर्डर ले आओ. स्टे ऑर्डर मींस कोर्ट सेज यू नीड टू स्टे एट योर पोजीशन. जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. फर्स्ट वी विल असेस द एंटायर केस, देन वी विल लेट यू टेक एक्शन. तो ये अभी भी हो रहा था. बैंक्स आल्सो यूज्ड टू हेजिटेट इन SARFAESI एक्ट बिकॉज बैंक्स वुड हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर गोइंग टू लूज मनी. ओनली देन दे वुड गो फॉर SARFAESI एक्ट. तो बैंक्स भी हेजिटेट करते थे और बैंक को लगता था शायद अब रिकवरी हो जाएगी. लेटर इट माइट हैपन. There is an expectation that recovery might happen. So बैंक भी hesitate करता था और stay order का भी option था. So still the problem was not completely solved. Then in 2016 a new framework was thought about called the Insolvency and Bankruptcy Code, IBC. अब हम next पढ़ेंगे इसके बारे में कि Insolvency and Bankruptcy Code क्या था. अब आप मुझे बताओ कि यहां तक आपको कहानी समझ आई कि क्या चल रहा है और कुछ क्लैरिटी हुई जो पहले आपने पढ़ा था और अब जो आप पढ़ रहे हो. इज आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस? अब हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या था. अब जब ये हो गया, चलो अब फिर से थैंक यू. अब चैट बंद करते हैं और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड समझते हैं. अब कहा गया कि एक नया टाइप का मैकेनिज्म चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. अभी भी वो टाइम वाली प्रॉब्लम कुछ हद तक तो सॉल्व हुई है. 2% से 10% पे तो हम आ गए, बट वी हैव टू गेट टू 70%, इफ नॉट 70% देन एटलीस्ट 50%, 60%. तो एक नया लॉ लाया गया कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं, फिर हम आगे समझेंगे. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी.
Insolvency is a state. Insolvency means solvent क्या होता है? Liquid. Liquid is a solvent. Insolvency means they are almost the same thing, थोड़ा सा difference है. Insolvency means my state. मैं अभी किस condition में हूं? I do not have enough liquidity. I do not have enough liquidity to repay my obligations. मुझे liquidity चाहिए, मुझे cash चाहिए to repay my money चाहिए to repay my loans. Insolvency is a state which is I don't have enough liquidity to repay my loan. Bankruptcy is a status. Bankruptcy is something that is declared. Some entity declares you bankrupt. जैसे कि court will declare that you are bankrupt. You can declare that you are bankrupt by going to court. Bank can declare you bankrupt, that you don't have any money left. This is a state. This is a declared status. थोड़ा सा ही फर्क है. Just I hope you are able to understand the logical difference. नहीं भी समझ आ रहा तो कोई nobody is going to ask you this difference. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए एक कोड बनाया हमने. वी मेड अ कोड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी हैव सीन सो फार. तो अब हमने क्या किया? हमने कहा 3 तरह के लोग हो सकते हैं. देयर कैन बी एन इंडिविजुअल, देयर कैन बी अ पार्टनरशिप और देयर कैन बी ए कंपनी. या तो एक इंडिविजुअल है या एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप ऑफ 2-3 पीपल. Or there is a company, a proper company is there, who are unable to pay a business loan. Unable to pay a business loan greater than equal to 1 crore. 1 crore से कम के लोन्स पे IBC applicable नहीं है, because these are considered small amounts. Of course, हमारे लिए amount small नहीं है, but if you look at the banking system, these are small amounts. An individual or partnership or company that is unable to repay a business loan of greater than 1 crore. In this case, IBC comes into picture. एक example से समझते हैं. Let's take the example of a company. Let's say Titan watches. Now, there are many people who are associated with Titan watches. They will have certain employees. They have taken loan also from bank. टाइटन वॉचेस बनाता है, तो टाइटन के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, राइट? Somebody, Titan maybe gives these watches further to distributors, who then give it to retailers. And Titan also takes certain things. Let's say Titan buys leather for its straps from a leather company, buys quartz for making watches from a quartz company. अब जनरली ऐसे बिजनेस साइकिल में पेमेंट कैसे होती है कि टाइटन इनसे लेदर और क्वार्ट्स लेगा, वॉच बना के डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, रिटेलर देगा कस्टमर को. कस्टमर विल गिव मनी to retailer, retailer will then give it to distributor, distributor will then give it to Titan watch, Titan watches will then pay leather company, and then they will pay quartz company. This is how it generally works. So there is some sort of cycle, there is a delay in payment of cycle. ठीक है? Titan will recognize from this leather company and quartz company, Titan will recognize that yes, you have paid us money, you have given us your leather and quartz, we have to pay you money, हमें आपको पैसे देने हैं. टाइटन उनको कमिटमेंट लिख के दे देगा, but we will only pay you once we receive the money, or let's say we will pay you after 3 months. So Titan is writing on a contract to this leather company that I will give you your share after 3 months. So this is also a type of debt जो उनको 3 महीने बाद रीपे करनी है. This is also a type of debt. This type of debt, ये जो debt है, this debt has arisen because of the operations of this company.
known as operational credit. Credit is taking loan, credit card is loan. Titan has sort of taken a loan here, saying that we will give you this money later. There is operational credit because of the nature of operations of Titan. This debt has arisen because of supply of some item. They have given you leather, you are supposed to pay them back. You say we will pay back 3 months later. Now there is an operational credit. Second type of loan is this, where you just take money for your business. यहां पर कोई आइटम की सप्लाई तो नहीं हुई, कोई ऐसा ऑपरेशंस इन्वॉल्व तो नहीं है. This is just money taken as loan. This is called financial credit. These terms will become very important when we understand IBC. This is operational credit. This is financial credit. Financial credit is credit that you take generally from banks. अभी मैं आपको IBC के sections में दिखाऊंगा how it is defined. Financial credit is things, let's say you are taking from a bank. Operational credit is credit you take for supply of some item. They have given you leather, they have given you quartz. There are also employees of the company. You have to give them salaries. Let's say you say to the employees that we are not going to give you a salary for 3 months. 3 महीने बाद आना हमसे salary मांगने. This also becomes some sort of debt. Now, why is Titan unable to repay this debt? Titan क्यों इनको पैसे नहीं दे रहा? Let's say the normal period is 3 months. Titan does not repay for 3 years. 3 साल तक Titan does not repay this money to them. Loan वापस देना था 2 साल बाद. It has been 10 years. Titan has not been able to repay. Titan is not paying salaries to the employees. So, what is the problem? Titan might not have the liquidity required. So, Titan might be in a state of insolvency. Now, these people, the people who have given some, they are suppliers of Titan. These people have given an operational credit to Titan. These people have given financial credit to Titan. Operational credit and financial credit. Operational credit is given or financial credit is given. Operational creditors of the company और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. इट कैन अगेन, अभी यहां पे कंपनी की बात थी, या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं कि मेरे साथ भी ये सेम चीज हो रही हो, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है. एनी ऑफ दीज एंटिटीज हैविंग ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, एंड यू आर अनएबल टू रीपे एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, एनी क्रेडिट दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस मोर देन इक्वल टू 1 करोड़. 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, राइट? दीज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और दीज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एंड यस इट इज बोथ. ये बात बहुत नोट्स में गलत लिखी हुई है कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, बट ये बात एक्चुअली फैक्चुअली गलत लिखी हुई है बहुत नोट्स में कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैन नॉट गो टू एनसीएलटी. दे कैन गो, और मैं आपको उसका आईबीसी का भी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, राइट? बोथ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स will approach a body called NCLT, called National Company Law Tribunal. National Company Law Tribunal is a tribunal, a specialized court that is acting for company law. Where is the Companies Law written? Companies Act of 2013. So under Companies Act of 2013, NCLT was established. जैसे हमने देखा आरडीडीबी एक्ट में डीआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड, ऐसे ही कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी वाज एस्टैब्लिश्ड. यू कैन गो टू एनसीएलटी फॉर प्रोसीडिंग्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. आईबीसी की प्रोसीडिंग के लिए अगर आपका बिजनेस लोन रीपे नहीं हुआ है, यू वर सपोज टू गेट इन 3 months, 3 month 1 day पे भी आप यहां जा सकते हो. यू कैन गो इमीडिएटली इवन 1 day आफ्टर योर डेट वाज नॉट पेड. 3 महीने में आपको, आप एक सप्लायर हो, आपको कहा गया 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, आपने कहा ठीक है, 3 महीने 1 दिन हो गए, यू कैन गो टू एनसीएलटी फॉर आईबीसी प्रोसीडिंग. अब यहां क्या होगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं. एक कंडीशन है यहां पे. एक कंडीशन क्या थी? बिजनेस लोन
more than 1 crore, तभी आप IBC स्टार्ट कर सकते हो. IBC does not apply to willful defaulters. Willful defaulter हम कल देख चुके हैं. और incapable defaulters. Incapable means that there is no capacity whatsoever of this company of repayment. This company has no money left whatsoever. They are incapable of any repayment. They have no assets, nothing. Willful तो है कि मैंने जान के डिफॉल्ट किया है. Incapable means there is no sort of asset left. तब तो क्या ही होगा यहां पे, है ना? So not for willful defaulter, not for incapable defaulter, individual partnership or company unable to repay a business loan of greater than or equal to 1 crore. Financial creditors or operational creditors both can approach the NCLT for IBC proceeding. इस केस में let's say one of these suppliers goes to NCLT and says, we have not received our payment. We have not received our payment. Please start IBC proceedings. IBC Insolvency Bankruptcy Code की proceedings आप start कर दो against Titan Watches. NCLT will not immediately accept the application. NCLT will give 14 days time. अगर NCLT ने ये एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन यहां से गई है, अगर इसे आज इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, the acceptance of this application means that Titan Watches is bankrupt. NCLT by accepting the application declares Titan Watches as bankrupt. तो NCLT gives 14 days time, 2 हफ्ते का टाइम देता है NCLT. It will send a notice to Titan Watches. It will send a notice to Titan Watches and say that, okay, this person has come to me. This person is saying that you have not given payment. तो प्लीज आप इसको इसकी पेमेंट दे दो ताकि हम आपके अगेंस्ट IBC प्रोसीडिंग स्टार्ट ना करें. 14 दिन का टाइम दिया जाएगा टाइटन वॉचेस को टू सेटल दिस क्लेम. इन 14 डेज में हो सकता है टाइटन इज एबल टू सेटल दिस क्लेम विद द लेदर कंपनी एंड इट विल बी सॉर्टेड. Similarly, bank can also go. Bank did not get repayment. Bank can go to NCLT. NCLT gives 14 days time. In this 14 days, Titan Watches can settle this. But let's say 14 days pass and still Titan Watches is not able to give any sort of repayment. इस अभी भी Titan Watches repay नहीं कर पा रहा है. Then insolvency bankruptcy code proceedings will start. NCLT will then accept the application and proceedings will start. What is the nature of these proceedings? What is the nature of these proceedings? सबसे पहले, the moment the application is accepted, it will be assumed that Titan Watches is now bankrupt. अब Titan Watches जो है bankrupt है, इसकी ability नहीं है कि ये खुद से debt repay कर सके. नाउ टाइटन वॉचेस के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, बहुत लोगों ने टाइटन वॉचेस को लोन दे रखा है, दे विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. सारे क्रेडिटर्स आएंगे और एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी. दिस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स will appoint someone called as insolvency professional and resolution professional. The moment NCLT declares them as bankrupt and declares that we have accepted the application, the current management of Titan Watches will be removed. इनकी मैनेजमेंट को हटा दिया जाएगा. Their current management will be removed. And this insolvency professional, he will take the job of managing this company. He will take all the decisions for this company now. This resolution professional will prepare a resolution plan. A plan to resolve this debt.
अ प्लान टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो डेट है इसको रिजॉल्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल नाउ स्टार्ट मैनेजिंग द कंपनी. रेजोल्यूशन प्लान जो भी बनेगा, वॉट एवर रेजोल्यूशन प्लान ही मेक्स, ही सेज लेट्स से, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है. रेजोल्यूशन प्लान कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. Things like we will sell all the buildings that Titan Watches owns and we will give you this money. We will run this company for some time and we will recover this money. We will sell Titan Watches to, let's say, Rolex watches and they will repay your money. They are willing to give this much amount and you will all get some more money back. Obviously 100% recovery नहीं होगी, जितनी भी हो पाए. इस टाइप का वो एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा. This resolution plan will be presented to the committee of creditors. Committee of creditors को ये resolution plan present किया जाएगा. If by 66% voting, this resolution plan is approved. 66% voting कैसे होती है मैं बताऊंगा. 66% voting से this resolution plan is approved. Let's say it is approved. Then it will be followed. जो भी रेजोल्यूशन प्लान बनाया, लेट्स से कि हम सारी बिल्डिंग्स बेच देंगे टाइटन की और हम रीपेमेंट करेंगे. ये रेजोल्यूशन प्लान यहां पर गया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 66% लोगों ने उससे अग्री किया, रेजोल्यूशन प्लान अग्री हो गया. द प्लान विल बी फॉलोड एंड दीज पीपल विल रिकवर देयर मनी. लेट्स से दिस प्लान इज नॉट अप्रूव्ड. यहां पर 66% वोट्स इस प्लान को नहीं मिल पाए. It is not approved. Then insolvency professional, rather than resolution professional, will make new plan and again present this to committee of creditors. Committee of creditors will then again vote approval or non-approval. ये process चलता रहेगा. The maximum time that is allocated for this process, ये पूरा process होना है, plan बनना है, फिर अप्रूव होना है. देन वंस इट इज अप्रूव्ड देन एवरीवन नोज ओके फाइन इट इज डन, राइट. हो सकता है 2-3 प्लान अप्रूव ना हो, दोबारा प्लान बनना पड़े. देयर इज अ टाइम लिमिट गिवन फॉर दिस. मेन प्रॉब्लम टाइम की थी. सो द टाइम लिमिट गिवन फॉर दिस इज 180 days. विदिन 180 days दिस हैज टू बी रिजॉल्व्ड. एक्सटेंशन ऑफ 90 days इज पॉसिबल. 90 days की एक्सटेंशन पॉसिबल है विद परमिशन फ्रॉम एनसीएलटी. तो मैक्सिमम इन 270 days. In 270 days, this ultimately has to happen and plan has to get approved. अगर 270 days में भी ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई, immediately we will go for liquidation of assets. Liquidation means selling off of all of the assets of Titan Watches and repaying the loans. Liquidation proceedings are what? Enforcement of security interest under SARFAESI Act. तो अगर 270 days में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो हम इनके एसेट्स लिक्विडेट करके इनके क्रेडिटर्स को पैसे वापस दे देंगे. Now, what are the general types of resolution plan that generally happen? Generally, resolution plan is that bids are invited कि Titan Watches is not able to run. ये अपनी कंपनी नहीं चला पा रहे हैं, आप आके इनकी कंपनी खरीद लो, इस कंपनी की ये वैल्यू है, इतने में खरीद लो, इनको पैसे वापस दो और आप इस कंपनी के सारे एसेट्स ले लो और उसको चला लो. Generally, these type of plans are made. If not possible in 270 days, then immediate liquidation under SARFAESI Act. अब एक दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं. मैं आपको ये this chart that I have made is a summary of the entire insolvency bankruptcy code in one page. Individual, partnership और company, इसको अभी इग्नोर करना, we'll come to this. Operational creditors or financial creditors, this is unable to repay business loan of greater than 1 crore. They will approach NCLT for IBC. NCLT decides in 14 days, accepts this application. As soon as NCLT accepts, a committee of creditors is made. This committee of creditors appoints insolvency professional and resolution professional. They will propose a resolution plan.
If it is finally rejected, liquidation and recovery of assets under SARFAESI Act, it is approved by 66% voting in committee of creditors. ये resolution plan मान लो approve हो गया तो it will be resolved. During this time, ये जो 330 days हैं, 330 हमने 270 देखा था, मैंने यहाँ 330 लिखा है, 330 कैसे आया वो भी बताऊंगा. अभी आप 270 मान लो, विल कम टू 330 की फिगर. ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो 270 या 330 डेज हैं, कोई भी लाइसेंस या परमिट जो इस कंपनी को मिला हुआ है, टाइटन वॉचेस को कोई लाइसेंसेस मिले होंगे वॉचेस बनाने के लिए, सेल करने के लिए, उनको रिवोक नहीं किया जाएगा. कोई भी और क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई और किसी तरह का SARFAESI एक्ट का केस वगैरह इन पे नहीं लगाया जाएगा. एक मॉरेटोरियम लगाया जाएगा. मॉरेटोरियम मींस हॉल्ट. A 30-day halt on the SARFAESI Act will be put. 330-day halt on SARFAESI Act will be put जब तक ये सारा काम पूरा नहीं हो जाता. अगर ये हो गया पूरा तो ग्रेट, नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, 330 डेज पास हो गए, नहीं बना कोई प्लान, लिक्विडेशन एंड रिकवरी. जिस दिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया, जो टाइटन वॉचेस की ओरिजिनल मैनेजमेंट है दैट इज किक्ड आउट, न्यू मैनेजमेंट कम्स. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. अब यहां पर आपके एक दो डाउट्स होंगे जरूर कि यहां पर ये 330 डे क्यों आया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा. और यहां पर DRT DRAT क्यों लिखा है जब काम NCLT का है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. इन चीजों को छोड़ के इज द प्रोसेस ब्रॉडली क्लियर टू यू? समझ आ रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों यहां पर टाइम वाला जो मेन फैक्टर था उससे डील कर लिया गया है? ठीक है, अब इसमें अभी हमें बहुत पढ़ना है. There are still a lot of things we have to read about the insolvency and bankruptcy code. Abhi, if you look at it, this was just a summary. We have to read why this code was brought. इससे फायदा क्या होता है, इसके पिलर्स क्या हैं, इसका काम क्या क्या है कोड का, इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का क्या काम है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जिसकी कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, व्हाट इज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन, व्हाट व्हाई और दिस मॉरेटोरियम क्यों आता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का फंक्शन क्या है, इसमें वोटिंग कैसे होती है, व्हाट इज प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. अभी ये सारा काम रहता है. अभी आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस टू यू ब्रॉडली. अभी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये क्या है. आईबीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. अभी हमने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा. अभी हमने नहीं पढ़ा है आगे व्हाट हैपेंस व्हेन कंपनी इटसेल्फ डिक्लेयर्स बैंक्रप्सी, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल टू विलफुल डिफॉल्टर. ये वैसे निखिल ऑब्वियस होना चाहिए. विलफुल डिफॉल्टर्स आर क्रिमिनल्स. आईबीसी इज फॉर फाइनेंशियल रीजंस की डेट. विलफुल डिफॉल्टर वाला केस मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था. मॉरेटोरियम क्यों है, कैसे है, ये अभी वी विल स्टिल अंडरस्टैंड. दीज आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इज द प्रोसेस ब्रॉडली क्लियर? ये बहुत बड़ा टॉपिक है आईबीसी. इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है. हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आईबीसी पे डिस्कशन होता है, हर साल. लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में देख लो है, अभी जो इस साल इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें भी आईबीसी पे डिस्कशन होगा. प्रोसेस समझ आया अभी ब्रॉडली? अभी हम डिटेल्स में जाएंगे.
Now we will go into details. Now we'll go into details कि IBC क्या है, कहां से आया और क्या करता है. ठीक है. ठीक है. Now I'm giving you a 5-minute break. I'll also take a 5-minute break. We'll come back after 5 minutes and continue from here. आज आपको मेरे साथ 4 घंटे रुकना है, तो आज आप ब्रेक ले सकते हो बिल्कुल.
All right, let's restart. Let's restart and understand ये process क्या है. Now let's understand the nitty-gritties of this process of insolvency and bankruptcy code. ठीक है? Now, this word, Chakravyuh challenge of the Indian economy, this term was used by the Economic Survey of 2017-18. उस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया दैट इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग अ चक्रव्यूह चैलेंज, और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई दैट वी हैव गॉन फ्रॉम सोशलिज्म विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ध्यान से पढ़ना, सोशलिज्म विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट. सोशलिज्म विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या मतलब? वी वर अर्लियर इन लाइसेंस कोटा परमिट राज. पहले इंडियन इकोनॉमी वाज इन दिस लाइसेंस कोटा परमिट राज, that licenses will be given, monopoly of the government will decide how much you will produce, import substitution, economy was not opened up before 1991, foreign direct investment was not allowed, trade barriers were there. This was the meaning of the word socialism with restricted entry. Post 1991 के economic reforms के बाद we have removed all of these systems. We have allowed foreign companies to come. We have removed the barriers to entry. जो entry यहाँ पर restricted थी of new firms, of growth of firms, of foreign companies, of trade, of imports, of exports, वो जो entry barriers थे उनको हमने remove करके we have gone more towards a market-based economy model. You remember command and control economy versus market-based economy model? हम 1991 में market-based model पर आ गए. We have done various reforms that promoted entry by eliminating these barriers, but there was no progress with regards to exit of firms. आप firm बना तो लेते हो, आप company ले तो आते हो, but what when your firm fails? आपको exit करने का भी अच्छा option मिलना चाहिए. You should be given an option to exit the market also. कि मेरे से firm नहीं चल रही, please close my company and let me exit. That exit was not happening. वो exit of firms was not there in the Indian economy. This is what 2017-18 economic survey was saying. Why was it not happening? या फिर exit होने से issues क्या थे? Exit was not happening. People एक बार वो firm start कर लें, अगर आपको अपनी company बंद करनी है, even today, closing a company down is one of the toughest processes in India. इससे क्या issues हो रहे थे? One, there was fiscal cost. Government had to support these sick firms. Sick firms का मतलब क्या? जो अच्छे से business नहीं कर रही, who are not able to pay their debts, who are not generating profit, who are not developing. Government will have to support them. कुछ bail out देना पड़ेगा, tariff support करना पड़ेगा, help करनी पड़ेगी बार बार. There was an economic cost. जो हमारी factors of production हैं, they are not being employed productively, and when there is lack of efficiency of use of factors of production, growth is stopped. हम पढ़ चुके हैं production possibilities curve में. There is also a political cost. आप एक sick firm चला रहे हो, आपकी firm अच्छे से काम नहीं कर रही, फिर भी government आपको support करे जा रही है, करना ही पड़ रहा है because exit is so difficult. And since the government is supporting you, government is giving support to sick firms, it was appearing as if government is favoring the large corporates. And there is a political cost of this also. People lose trust in the government. Suit boot ki sarkar. These sort of things start being said because exit options are not available even to sick firms. आपकी firm बढ़ नहीं रही है, grow नहीं कर रही है, profitable नहीं है, sustainable नहीं है, but exit options नहीं है. ये सबको solve करने के लिए ये इंसॉल्वेंसी रेजिम लाया गया. दो रीजंस के लिए. एक तो रीजन हमने देख ही लिया, कि टाइम से रिकवरी हो जाए बैंक्स की, क्रेडिटर्स की, वो तो हमने देख ही लिया. दो पर्पस से और लाया गया था ये इंसॉल्वेंसी रेजिम.
it will facilitate the exit of those firms that are not performing well. आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप एग्जिट कर सकते हो. एंड जो वायबल बिजनेसेस हैं, योर बिजनेस इज वायबल, आपका बिजनेस एक्चुअली अच्छा है, बट आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपको वो बिजनेस चलाना नहीं आता, इसीलिए वो नहीं चल रहा. इफ योर बिजनेस इज मैनेज्ड बाय समवन एल्स, दे माइट बी एबल टू रन इट वेल. इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, दिस ब्रॉड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वन ऑफ द स्टेप्स वाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू सॉल्व द चक्रव्यूह चैलेंज, कि लोग निकल ही नहीं पाते बिजनेस से, कर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, अटके हुए हैं वहीं पे. उसको सॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाज वन ऑफ द स्टेप्स. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के 4 पिलर्स हैं. अभी हमने देखा दैट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल बी अपॉइंटेड. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या काम है? टू मैनेज द कंपनी. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या काम है? टू मेक रेजोल्यूशन प्लान्स. दे विल मेक रेजोल्यूशन प्लान. सीओसी ने अप्रूव कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो दे विल मेक अनदर. ये बनाते रहेंगे रेजोल्यूशन प्लान. जनरली बोथ दीज पीपल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल, आर द सेम पर्सन. एक ही बंदे को ये दोनों काम करने को बोला जाता है. And they are together called insolvency resolution professionals or simply insolvency professionals. यही एक टर्म यूज कर दी जाती है दोनों के लिए. Although there are two functions here, one is management and one is making a resolution plan, but since one person is performing both these functions, that person is called insolvency professional. अब सबसे पहले तो ऐसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होने चाहिए हमारे पास, जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो एक कंपनी में आए, उसको रन भी कर लें और उनके साथ एक रेजोल्यूशन प्लान भी बना लें. इसके लिए आपको एक लाइसेंस प्रोफेशनल चाहिए और एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए. राइट? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम क्या है? दिस ही विल मैनेज द कंपनी and he will oversee the CIRP. What is CIRP? We will just see. जो हमने प्रोसेस देखी उसी को CIRP कहते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. वही हम देख रहे थे. एक कंपनी इंसॉल्वेंट है, उसकी रेजोल्यूशन प्रोसेस ही देख रहे थे हम, कैसे होगी, प्लान बनेगा, सीओसी अप्रूव करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हमें ऐसा एक आदमी चाहिए जो कंपनी को मैनेज भी कर ले और CIRP भी करा ले. तो फर्स्टली वी नीड लाइसेंस प्रोफेशनल्स जो ये काम कर पाए, और इसमें आपको एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट भी चाहिए, आपको रेगुलेशन और ओवरसाइट भी चाहिए कि ये चीज ढंग से चले. इसके लिए 2 चीजें देखी गई. एक तो चाहिए जुडिशियल ओवरसाइट. एक जुडिशियल अथॉरिटी को देखना है कि ये सारा काम ढंग से हो रहा है. दैट जुडिशियल ओवरसाइट अथॉरिटी इज कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एक है रेगुलेटरी ओवरसाइट. अ रेगुलेटरी ओवरसाइट क्या करेगी? ये दिस विल बी एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो सर्टिफाई करेगी दैट दिस पर्सन इज डिजर्विंग ऑफ बीइंग कॉल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. जैसे कि अगर आपको एक डॉक्टर चाहिए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफाइज दैट यू आर अ डॉक्टर. आपको इंजीनियर चाहिए तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफाइज दैट यू आर इंजीनियर. आपको लॉयर चाहिए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफाइज दैट यू आर लॉयर. सिमिलरली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए कोई चाहिए जो सर्टिफाई करे कि ये बंदा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है या ये ठीक है. सो एन एजेंसी दैट ओवरसीज, एनरोल्स एंड रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वाज रिक्वायर्ड. दिस वुड बी कॉल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल, ऐसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए आईपीए. आईपीए में 3 एजेंसीज हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इन तीनों को लाया गया टू, एंड दे वर मेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज टू सर्टिफाई कौन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, कौन नहीं बन सकता. देन ये पूरी प्रोसेस एक कोर्ट के अंडर हो रही है. दिस कोर्ट राइट नाउ वाज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. This is the adjudicating authority that is providing judicial oversight. वहां पर जजेस बैठे हैं who are deciding कि इस
एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना भी है, ये ढंग की एप्लीकेशन है या नहीं, नोटिस भेजना है, इसको डिक्लेयर करना है बैंकरप्ट या नहीं। तो अभी 3 एंटिटीज हमने देखी। पहला तो खुद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसको सर्टिफाई करने के लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो बताएगी दैट दिस पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और एक ओवरऑल अथॉरिटी जो एक जुडिशियल ओवरसाइट प्रोवाइड करेगी, जो यहां पर एनसीएलटी कर रहा था, कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नाउ इसके अलावा भी 2 पिलर्स हैं। दिस आई वांट दैट यू रीड ऑन योर ओन। यहां पर फंक्शंस ऑफ आईपीए गिवन है, ये डायरेक्ट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से ही उठाया हुआ है। आई वांट यू टू रीड दिस योरसेल्फ। आई हैव एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ दिस फॉर यू। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज क्या हैं? अभी तक हमने देखा एनसीएलटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वो हैं, वो ट्राइब्यूनल्स जो एडजुडिकेट करते हैं, जज करते हैं इस प्रोसेस को, जो ये जजमेंट पास करते हैं कि आईबीसी चला दो, आईबीसी की प्रोसेस स्टार्ट कर दो, दिस कंपनी इज एक्चुअली नॉट रिपेइंग इट्स बिल्स, ये जो कंप्लेंट आई है ये फेक कंप्लेंट नहीं है, एक्चुअली ये कंपनी इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, इनको हम डालते हैं इन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। जो भी ये डिसीजन लेता है, जैसे अभी एनसीएलटी टुक दिस डिसीजन आफ्टर 14 डेज। 2 तरह की इंडिविजुअल अथॉरिटीज और 2 तरह की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैव बीन सॉर्टेड आउट हियर। वन इज कंपनीज के लिए, हमने क्या देखा था, कंपनी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। अगर कंपनी है तो आप एप्लीकेशन लेके जाओगे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहां पर जो भी जजमेंट पास होगी आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, अपील का राइट तो देना पड़ेगा। अपील कैन बी डन टू नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकी जजमेंट के अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हो। यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फाइनली टू अपील। You think NCLT says start IBC proceedings against them. You think they have given the wrong order. We are actually paying back all the dues. You appeal the judgment to National Company Law Appellate Tribunal. NCLT also says you think they are wrong. Go to Supreme Court. Supreme Court में finally ये decision लो. Supreme Court के against आगे कोई अपील नहीं है. यहां पर ये फाइनल हो जाएगा. ये है फॉर कंपनीज. हमने देखा था कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के अगेंस्ट भी ये चीज स्टार्ट हो सकती है. इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के केस में ये चीज स्टार्ट होगी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में. सेम डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो हम पढ़ चुके हैं, मेड अंडर आरडीडीबी एक्ट. सो फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स दिस विल स्टार्ट इन डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अपील इज अगेन टू एनसीएलटी, देन अपील इज अगेन टू सुप्रीम कोर्ट. अब आप कहोगे अगर आपने अपील का प्रोविजन दे दिया तो टाइम वाला जो मेन फैक्टर था, यहां ये सारा कर ही इसलिए रहे थे कि टाइम की प्रॉब्लम ना आए, टाइम वाली प्रॉब्लम तो फिर आ जाएगी अपील में. तो यहां पर इसके लिए भी रूल बनाया गया है दैट यू मस्ट फाइल अपील विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग दिस ऑर्डर. एनसीएलटी ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर दिया, डीआरटी ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर दिया, आपके पास 30 days ही हैं अपील करने के लिए. 30 days से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप अपील करने के लिए. उसके बाद आप एनसीएलटी गए, इन्होंने भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया. अगेन यू हैव मैक्सिमम ऑफ 45 days ओनली. 45 days से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप. अगर आपने 46 days लगा दिए, वी विल अज्यूम दैट यू आर नॉट अपीलिंग. दिस टाइम ऑफ 30 days फॉर फर्स्ट अपील एंड 45 days फॉर सेकेंड अपील. फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील. बोथ ऑफ दीज इज एक्सटेंडेबल बाय 15 days. 15-15 दिन ये एक्सटेंड हो सकता है इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. What are those special circumstances? We will not go into. एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए. तो अभी हमने क्या देखा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक जो बताएगा कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड है या नहीं, जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बताती है, यहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. एक जजमेंट अथॉरिटी के क्या आईबीसी स्टार्ट भी करना चाहिए या नहीं, आईबीसी स्टार्ट भी करना चाहिए या नहीं, उसके लिए कौन है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी या डीआरटी. एनसीएलटी फॉर कंपनीज, DRT for individuals and partnerships. अपील स्ट्रक्चर हमने देख लिया. Then for actually this code to work, इस कोड को काम करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो. इंफॉर्मेशन किस चीज की, किसने कितनी डेट ली है, कितनी डेट रीपे कर दी है, कितनी डेट रहती है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था,
आर दे एक्चुअली डिफॉल्टिंग और देयर डेट और नॉट? इसके लिए समथिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज मेड. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम है हाई क्वालिटी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डेट एंड डिफॉल्ट मेंटेन करना. कोई कहीं तो इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसका है, वो काम करता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. दिस इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड. This company has been given the job of information utility. Lastly, there is IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, established under section 188 of IBC, under administrative control of Ministry of Corporate Affairs. इनका काम है overall oversight of this entire job. ये सब जो हो रहा है इसकी ओवरऑल ओवरसाइट. इनके फंक्शंस यहां लिखे हैं, डू रीड देम. थिंग्स लाइक रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू CIRP, लिक्विडेशन एक्सेट्रा. तो एक चाहिए ओवरऑल देखने के लिए कि ये प्रोसेस ठीक से चल रही है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर 4 पिलर्स. एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जिनको सर्टिफाई करेंगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, जो ये इंफॉर्मेशन रखेंगी कि किसने कितनी डेट डिफॉल्ट करी. एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, जो ये डिसाइड करेंगी कि एक्चुअली IBC लगना चाहिए या नहीं. यहां पर हमने एग्जांपल्स देखे NCLT के और DRT के. एंड लास्टली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ये क्या करेगा? व्हाट विल IBBI डू? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विल डू अ ओवरऑल ओवरसाइट ऑफ दिस प्रोसेस कि मार्केट में सही चल रहा है, इसके प्रोसेसेस सेट हैं, डेवलप हो रहा है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा. ये तो हुए पिलर्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रोसेस इन अ बिट मोर डिटेल. यहां पर कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ IBBI आर गिवन, विच यू नीड टू रीड एंड रिमेंबर. इंपॉर्टेंट है ये. अब देखते हैं जो प्रोसेस हमने ऊपर देखी है. वी हैव सीन द सेम प्रोसेस अबव. व्हाट इज द प्रोसेस? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, दे गो टू NCLT. दे से they are not repaying debt. NCLT takes 14 days, gives notice. If in 14 days it is not resolved, NCLT accepts application. NCLT accepts application, committee of creditors is made, insolvency professional is appointed. He will manage and also make resolution plan, which has to be approved by committee of creditors. If not approved, then we will start liquidation process under SARFAESI Act. इस पूरे प्रोसेस जो ऊपर वो चार्ट था, उसे ही कहा जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर. इन्होंने इंसॉल्वेंसी है, डेट ली हुई है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस है. अब वहां पर हमने 3 टाइम्स देखे, या तो 270 डेज या फिर 330 डेज. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम IBBI's वेबसाइट. इसको पढ़ते हैं. As per section 12 clause 1 of insolvency bankruptcy code, CIRP shall be completed within a period of 180 days from the date of admission of application to initiate such process. Date of admission मतलब जिस डेट पे एप्लीकेशन एडमिट कर ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई फॉर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. The adjudicating authority might grant a one time extension of 90 days. 270 हो गया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, NCLT जो है, वो एक बार एक्सटेंशन दे सकती है 90 डेज की. द मैक्सिमम टाइम विद इन विच CIRP हैज टू बी मैंडेटरीली कंप्लीटेड इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन और लिटिगेशन पीरियड. हो सकता है उस प्रोसेस के बीच में कोई और केस हो जाए, तब भी ये 330 डेज में खत्म होना ही होना है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर 3 टाइमलाइंस हियर. दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम IBBI's वेबसाइट. इससे ऑफिशियल हमें डेटा नहीं मिल सकता. तो क्या कह रहा है? 180 डेज में होना है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन गिव एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज, और चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सटेंशन मिल जाए, कोई लिटिगेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट हैज टू फिनिश इन 330 डेज. हु कैन इनिशिएट दिस प्रोसेस? अभी हमने जो ऊपर प्रोसेस देखा था ऑफ टाइटन वॉचेस, यहां पर दिस क्रेडिटर, दिस लेदर कंपनी वाज ट्राइंग टू इनिशिएट द प्रोसेस. यहां पर लेदर कंपनी ये प्रोसेस को इनिशिएट कर रही थी.
कौन कौन इसको इनिशिएट कर सकता है? हु कैन इनिशिएट? ईदर फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट, ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन इनिशिएट, कंपनी इटसेल्फ कैन ऑल्सो इनिशिएट। कंपनी खुद भी कह रही है कि हमसे नहीं हो रहा रिपे, प्लीज गो टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड प्रोसेस एंड सॉल्व दिस आउट, वी कांट मैनेज दिस कंपनी एनी लॉन्गर। तीनों लोग इनिशिएट कर सकते हैं। लोन अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 करोड़ टू इनिशिएट सीआईआरपी। अगर 1 करोड़ से छोटा लोन है तो सिंपली सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में इनफ प्रोविजंस आर देयर, you can sell the security, you can auction the security, you can sell the loan to asset reconstruction company। 1 करोड़ से छोटा लोन है सरफेसी एक्ट, 1 करोड़ से बड़ा लोन है तभी आईबीसी आएगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन है? डिफाइंड एज एनी पर्सन टू whom a financial debt is owed। what is financial debt? Debt along with interest which is disbursed against time value of money। if you don't understand this line, it is completely fine, simply means debt taken with interest from example, for example taken from a bank, taken from an NBFC, any type of loan taken। financial debt is defined in section 5 clause 8 of IBC। okay, second, home buyers as financial creditors। this is current affairs news। in 2018 an amendment was passed in insolvency bankruptcy code। ये लिखा था इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में, 2024 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बात बहुत डिटेल में लिखी हुई है। इन्होंने क्या कहा? अलॉटी अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दैट इज बायर ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। मतलब क्या? जनरली जब एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होता है, लेट्स से DLF says we are going to build 2 apartment buildings in Gurgaon। DLF ने ये आज अनाउंस किया। After the announcement is done, DLF will buy the plot of land and say that we are going to do this। अभी से इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। DLF will start selling this right now। People will buy it right now because लोग DLF को ट्रस्ट करते हैं। आज ही DLF ये सेल करना शुरू कर देगा। अभी DLF के पास सिर्फ लैंड है। दिस इज मियरली बिन अनाउंस्ड। अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है कि हम ये बिल्डिंग्स बिल्ड करेंगे, तो भी इसमें जो प्लान होगा उसके हिसाब से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोग पहले ही पैसे दे देंगे। सम ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन, लेट्स से 10% अमाउंट विल बी गिवन, एंड इस टाइप की डील्स होती हैं दैट रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन ऑन पोजेशन। जब कंप्लीशन हो जाए तब आप बाकी पैसा ले लेना। Why is DLF doing this? So that DLF gets certain money for this construction। DLF को पहले ही पैसा मिल जाए for construction। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम इज सिंपल। DLF takes this money but does not construct this or is unable to construct this। some problem happens। मैंने तो पैसे दे दिए। Let's say this flat was for 1 crore rupees। DLF says give 10% money in advance। बुकिंग कराने के लिए बुकिंग अमाउंट आप दो 10%, बाकी 90 लाख आप तब देना जब आपको हम एक्चुअली घर देंगे। मैंने तो 10 लाख दे दिए। DLF ने सबसे 10 लाख कलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। सम प्रॉब्लम हैपेंड एंड DLF वाज नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस। नाउ मेरे को घर तो मिला नहीं क्योंकि घर तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ, एंड आई हैव ऑलरेडी पेड 10 लाख टू DLF। नाउ एम आई एन ऑपरेशनल क्रेडिटर और एम आई अ फाइनेंशियल क्रेडिटर? देखा जाए तो ये ऑपरेशनल भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि पार्ट ऑफ ऑपरेशंस है। फाइनेंशियल भी कहा जा सकता है। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ जहां कहा गया कि बायर ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये कंफ्यूजिंग था, इसको क्लैरिफाई किया गया। दिस वाज देन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2019। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया। दूसरे टाइप ऑफ क्रेडिटर्स हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इज एनी पर्सन अगेंस्ट whom an operational debt is owed। what is operational debt? A claim in respect to supply of goods and services।
हमने देखा था टाइटन वॉचेस के लिए लेदर कंपनी वॉज ऑपरेशनल क्रेडिटर, बैंक वॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर, होम बायर्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. Who can initiate the process? Financial creditor can initiate, operational creditor can initiate, company itself can also initiate. After initiation, NCLT will evaluate the application, give 14 days notice. NCLT can choose to accept this application कि हाँ ठीक है, they are not repaying, you are right, let's start IBC, or they can reject that no, your claim is false, वो कर देंगे आपको repay, हमें नहीं लगता कि अभी IBC की जरूरत है. After this acceptance happens, IBC proceedings will start. What is moratorium? ऊपर हमने देखा था moratorium from SARFAESI Act. Moratorium क्या है? A period where no judicial proceedings for recovery of loans can be instituted against debtors. I am the owner of Titan Watches. Titan Watches has not paid debt. One of their operational creditors says, I want to start IBC proceeding. इसी दौरान second financial creditor comes and says, I want to recover from their assets from SARFAESI Act. Now this is not allowed. एक बार IBC स्टार्ट हो गया, 330 डेज का टाइम है, 330 डेज तक और कोई रिकवरी का प्रोसेस नहीं होगा, IBC ही चलेगा, नथिंग एल्स विल गो ऑन. नहीं तो मल्टीपल चीजें साथ में चलने लगेंगी. हाउ विल वी गेट टू एग्जीक्यूट देम? दिस इज व्हाई मॉरेटोरियम इज देयर. मॉरेटोरियम इज फॉर 330 डेज बिकॉज IBC की मैक्सिमम लिमिट इज 330 डेज. 330 डेज के बाद आपने SARFAESI एक्ट में स्टार्ट करनी है लिक्विडेशन, आप कर दो. फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, यहां है सारा. दिस इज वाई ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर समझना जरूरी था. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में देयर आर ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, नॉट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. व्हाई? बिकॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर इज एट अ हायर पेडेस्टल देन ऑपरेशनल क्रेडिटर. अगर रिपेमेंट होनी है, लेट्स से amount owed to financial creditor is 100 rupees, amount owed to operational creditor is 50 rupees and total recovery is 120 rupees. तो पहले 100 rupees फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिए जाएंगे, फिर जो भी बचेगा उससे ऑपरेशनल क्रेडिटर को पे किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड हायर डेट और प्रेफरेंशियल डेट एंड सबऑर्डिनेट डेट. ये भी हम आज ही पढ़ेंगे. फॉर नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जनरली गेट पेड फर्स्ट. इसीलिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जहां पर सारे डिसीजन होने हैं, वहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होंगे. इनिशिएट ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, बट इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल सिट. दैट इज व्हाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अनफिनिश्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाना इंपॉर्टेंट था, ताकि जो होम बायर्स हैं उनको भी एक वॉइस मिले. व्हाट हैपेंस इफ अ कंपनी हैज नो फाइनेंशियल डेट? ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कंपनी की सिर्फ ऑपरेशनल डेट है, फाइनेंशियल डेट है ही नहीं. इफ देयर इज नो फाइनेंशियल डेट, देन इन दैट केस द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. अगर ऐसी कमिटी बन रही है तो सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे. अगर फाइनेंशियल डेट है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होंगे. ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल सिट इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का क्या काम है? COC का क्या काम है? COC will first appoint the insolvency professional and resolution professional, and they will also approve of the resolution plan. अप्रूवल देना भी उन्हीं का प्लान है. Now, how does voting happen in committee of creditors? हमने देखा 66% votes are required. Committee of creditors is not a place where there is one person one vote. ऐसा नहीं है कि one person है और one vote है, कि जितने भी लोग हैं उनका एक एक वोट है, ऐसा नहीं है. Voting is by value of credit. This is Titan Watches. Titan Watches को 3 बैंक्स ने लोन दिए हैं, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3. बैंक 1 ने लोन दिया है ऑफ 100 करोड़, बैंक 2 ने लोन दिया है ऑफ 10 करोड़, बैंक 3 ने लोन दिया है ऑफ 90 करोड़. तो इनके जो वोटिंग राइट्स हैं, दे विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ देयर
लोन, तो बैंक 1 को दिए जाएंगे 100 वोट्स, बैंक 2 को दिए जाएंगे 10 वोट्स, बैंक 3 को दिए जाएंगे 90 वोट्स, एंड नाउ 66% हैव टू अग्री. They will not get 1 vote each. So even if bank 2 and bank 3 are agreed, technically 2 out of 3 are agreed, 66% are agreed, तब भी ये अप्रूव नहीं होगा because bank 1 has 100 votes. It is 66% by value of credit, not 66% by majority. Now, next we have to read PIRP, but this we can broadly, अभी हम देखेंगे इसको, एक अलग चीज है. What are the benefits that are coming from IBC? क्यों हमने IBC लाया, इससे क्या फायदे हो रहे हैं? सबसे पहले stalled projects, जो projects रुके हुए हैं because people are not acting on them, वो रोक के बैठे हैं, जैसे कि real estate projects हैं, people are not working, कहेंगे यार construction रुकी हुई है. Now they are fearful that if IBC proceedings started against me, I will be removed from my company. There is fear of loss of control. पहले मेरा प्रोजेक्ट रुका हुआ था, I was saying मैं कर दूंगा, I will make it, तब देख लेना. Now as soon as time limit is breached, somebody can go to NCLT or DRT and say कि IBC start करो. The moment IBC is started, I will be kicked out and new management will come. I will lose my control over the company. तो कई लोग जो पहले एक्चुअली पे नहीं कर रहे थे, वो अब पे करने लगे हैं अपनी डेट. Advanced settlements are happening. Second, recovery of creditors is actually happening. जो लोन उन्होंने दिया है उसकी रिकवरी होने लगी है. बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बेटर हो गई है आफ्टर IBC. The rate of recovery was 2% earlier. Post SARFAESI it was 10%. It became 49% after IBC was passed. 43% or 45%, 49%, यही, this is the broad data. आप मान लो more than 40%. This is a huge increase because IBC actually leads to recovery, time-bound recovery. Now, if I feel that I cannot run my company, I feel that my management is not good, I cannot run, now there is actually a chance of an honorable exit. I can directly go to NCLT and say कि नहीं, I am not able to do this, I have these many debts, you please appoint someone else. पहले exit करने का option ही नहीं था. There was the Chakravyuh challenge. Now honorable exit is there. Assets are freed up. जो पैसा यहां पर रुका हुआ था, जो लोन का पैसा अटका हुआ था, that actually gets recovered. Finances of the country go up. Money actually comes back into the economy. Business revival also happens. इसी के लिए मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूं, इसके बारे में जरूर पढ़ना. There was a case of Essar Steel. This is one of the most shining examples of IBC in India. Essar Steel had a loan of 50,000 crores. This was the loan amount that they were unable to repay back. 50,000 crores के लोन अमाउंट पे यहां पर IBC प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया गया. There was no chance that this would be recovered. Almost sure थे कि ये पैसा रिकवर नहीं होने वाला. बहुत सारे बैंक्स ने ये लोन दिया हुआ था. Obviously, one bank can't give 50,000 crore loan. 4-5 banks थे who had given 50,000 crores to Essar Steel and Essar Steel was unable to repay. IBC proceedings were started. Resolution professional was appointed. Insolvency professional was appointed. They made a resolution plan which was to sell this company to Mittal Steel. Lakshmi Mittal के बारे में आपने सुना होगा, one of India's richest persons who is a steel tycoon. He collaborated with some foreign company to buy Essar Steel. He bought this company for 49,000 crores. So almost all of the recovery of the banks happened. Mittal Steel acquired Essar Steel. And Mittal Steel till today continues to run this, and now Essar Steel independently is profitable company because Mittal Steel was able to manage and use their assets well. Asset बेचना, steel plant बेचने से बहुत better है
कि किसी और को दे दिया जाए जिसको एक्चुअली मैनेजमेंट आती है, एंड देन दैट पर्सन यूजेस इट फॉर प्रॉफिट्स. So Essar Steel even independently is now profitable. Obviously, it's now part of Mittal Steel. And the recovery was also done. Economy was also revived. One of the shining examples of success of insolvency and bankruptcy code in India. This is the sort of resolution plans that are made. If this was not accepted, ये accept नहीं होता मान लो, then we would have gone for liquidation of assets of Essar Steel under SARFAESI Act. अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता 330 डेज में, ये सारा काम नहीं चलता, देन वी वुड हैव गॉन फॉर लिक्विडेशन ऑफ एसआर स्टील एंड बेच देते उनके सारे एसेट्स, जो भी पैसे मिलते उनसे डेट रीपे करी जाती. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज हैपनिंग? कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ आया, जो चीजें शायद पहले ना समझ आई हो? नाउ आर वेरियस थिंग्स क्लियर. बड़ा टॉपिक है, आई नो इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट एवरी ईयर इट इज देयर इन इकोनॉमिक सर्वे. एवरी सिंगल ईयर इट इज देयर इन इकोनॉमिक सर्वे. आप जिस साल का इकोनॉमिक सर्वे उठाना है उठा लो, ये टॉपिक दिया है. टू रिसर्च व्हाट आई हैव जस्ट टॉट यू, आई हैव टेकन अबाउट 10 hours. रिवाइज आपको जरूर करना पड़ेगा, हैवी टॉपिक है, मैं मानता हूं. आई अग्री इट इज अ हैवी एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक. But every single word that you would possibly need to understand IBC is written here. सारे वर्ड्स यहां लिखे हैं, है ना. एक बार रिवाइज जरूर करना. यस ऑफ कोर्स महेंद्र, तभी तो रिकवरी हाई है ना. रिकवरी तो देखी हमने. IBC is a topic that confuses even teachers of economy. I am sure that अब आपको दिक्कत नहीं आएगा. There is no liquidity method in IBC. For liquidity, we will go for SARFAESI Act. Someone is saying 49% is very low. 49% is low compared to 70% of US, but it is much higher than 10% at where we were. है ना. अब द प्रोसेस इज क्लियर टू यू. आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे, एनी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ योर चॉइस यू पिक अप, you will see lot of discussion on insolvency and bankruptcy code because it is a major achievement of this government. ठीक है. Now, before we started reading NPAs and SARFAESI Act and all of this, नहीं आनंद, अगर लिखा है IBC is not for willful defaulters, it is not for willful defaulters. बात खत्म. Right? We can go on discussing this. We can go on discussing this, but I understand that broadly this is clear. Now, before we were reading the idea of SARFAESI Act, जब हमने NPA start किया, we were reading something called Capital Adequacy Ratio and Provisioning. यही पढ़ रहे थे हमने यहीं पे डिस्कशन किया, यहां पर हमने डिस्कशन किया ऑन कैपिटल. याद है हमने ये बात की थी कि ये कैपिटल कहां से आएगा. अभी हमने आपको कहा था कि अभी के लिए इसको प्रॉफिट मान लो. फॉर नाउ लेट अस कंसिडर दिस प्रॉफिट. हमने यही बात करी थी, राइट. अभी के लिए हमने कहा था इसको प्रॉफिट मान लो, बट अब हम एक्चुअली देखेंगे व्हाट इज कैपिटल. And to understand what is capital, we will actually study
capital markets. Now we will come to probably the most awaited part of economy. We will study the stock markets and capital markets of India. We will study capital markets and everything around it. कि capital markets क्या होती हैं? This is what we will study. Right? What is capital and what is capital market? Right? In this case, this is not the capital we were discussing for factors of production. What we will discuss now, this is actually money. Financial capital market. That's what we are going to study. Okay? Now, capital can be raised in two forms. आप में से कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा है? चलो, we'll take a break for 2 minutes, not a problem. काफी हैवी टॉपिक पढ़ लिया है आपने आज मेरे साथ. एक ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, फिर हम कैपिटल मार्केट स्टार्ट करेंगे. अभी बैंकिंग कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी बैंकिंग कंप्लीट नहीं हुआ है. We are just diverting from banking to read capital markets. From here we will come back and finish banking. 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, then we'll come back and continue. अरे 3 मिनट ले लो यार, बिग डील. एक मैं आपको कहूंगा इन 3 मिनट में, शार्क टैंक थोड़ा याद करना, उस प्रोसेस में हो क्या रहा था. जिसने भी देखा है शार्क टैंक, जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट प्रोसेस. Akshay, yes. All right, chalo. Let's get back.
शार्क टैंक जिसने ना देखा हो, आज कोई एपिसोड एक देख लेना. जस्ट वॉच 10-15 मिनट्स ऑफ एनी वन डील टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. Money or capital can be raised in two forms. I am running a company. Let's say this company is running. This company needs certain money. Money for expansion, money for operations, money for anything. इस कंपनी को इस मनी को रेज करने के दो तरीके हैं. या तो इस कंपनी के पास इतना प्रॉफिट हो कि ये अपने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर ले. Generally, that is not the case. Even if a company has a lot of profit, you would like to raise money from outside because let's say your profit is 50 crores, very high amount of profit, 50 crores. Even then, when you want to expand, you might need 100 crores, you might need 200 crores. So, generally, ways to raise money are twofold. One is you can ask for debt. आप लोन मांग लो, उधार मांग लो पैसा. That is one way. The second is equity. You can go to someone and say that देखो, this is my company. This company does a revenue of 250 crores. This company has a profit of 50 crores. I want 100 crore rupees for the expansion of this company. Either I can take this 100 crore rupees as a loan at 12% rate of interest. This is one option. Other option is this is my company. Based on this, I can say that I will give you, let's say, 10% of my company. You will become the 10% owner of my company. You will become 10% shareholder of my company. And you give me this 100 crores. I will use these 100 crores for expansion. After using this 100 crores for expansion, this company will now do revenue of 500 crores. It will do profit of 200 crores. Out of this 200 crores, you are anyway 10% owner. So within 5 years, your investment will be recovered. आप थोड़े टाइम बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लोगे. आपको एक्सपेंशन में करूंगा, प्रॉफिट 200 करोड़ हो जाएगा. वहां से फिर 20 करोड़ आपको मिलते रहेंगे. एवरी ईयर आई विल कीप डूइंग 200 करोड़ प्रॉफिट. यू विल कंटिन्यू टू बी 10% ओनर फॉर परपेचुइटी, फॉर लाइफ. जब तक आप ना बेचो, आप 10% के ओनर हो और आप मेरे प्रॉफिट का 10% लेते रहना. आपकी रिकवरी हो जाएगी. दिस इज अनदर वे टू रेज मनी. This way of raising money is through selling of equity. You are selling equity to raise money. Right? You are selling some percentage of your company to raise money. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप इस पर्सपेक्टिव से मत सोचो. Think from this perspective. Person who has to give this money. अगर आप लोन देते, if you were to give a loan of 12%, you were sure, at least at some level you were sure that you will recover 12% per year. 12% of 100 crores is 12 crores. You will recover 12% per year till this loan is not repaid back. अब इस केस में you are tied to the success of this company. What if this person fails? एक्सपेंशन करी और प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं. 50 करोड़ से 200 करोड़ प्रॉफिट करना था, 50 करोड़ से 55 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ. नाउ यू आर इन अ फिक्स. अब क्या करो आप? और एक्चुअली हो सकता है लॉस होना लग जाए. राइट? नाउ एक ऑप्शन तो ये है ही डेट देने का. अब आप कहोगे देखो यार, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेट योर कंपनी टू 200 करोड़ प्रॉफिट. मुझे नहीं लगता कि आप 200 करोड़ का प्रॉफिट कर सकते हो. मुझे लगता है दैट योर कंपनीज प्रॉफिट even after this expansion will maximum be 80 crores. If I am giving you 100 crore, I want that every year I should recover 20 crores. Only then I will give it to you. मुझे लगता है आपका जो प्रॉफिट है वो 80 करोड़ होगा. तो इस 100 करोड़ के बदले मुझे 25% ऑफ योर कंपनी चाहिए.
जब आप 80 करोड़ प्रॉफिट करोगे, देन 25%, 1/4 ऑफ 80 करोड़ इज 20 करोड़, एंड आई विल देन कीप गेटिंग 20 करोड़ पर ईयर. तब मेरी एक्चुअल रिकवरी होगी. यही शार्क टैंक में डील्स आप देखते हो. कोई कहता है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, कोई कहता है 1 करोड़ फॉर 3% इक्विटी. द मेन fact or the most important fact in this sort of deal is valuation. What is the value of the company that I am buying? Debt में तो बहुत आसान है. In case I am giving debt, I know 12% पे रिटर्न आएगा, बात खत्म. इस केस में they have, जो कंपनी का फाउंडर है, जो ओनर है, उसने कोई मेंटल मॉडल लगा के ये बोला है that ये कंपनी यहां से यहां पहुंच जाएगी. Right? The owner of the company is saying this company does 50 crore revenue today. It will do 200 crore revenue, let's say 2 years later. 50 crore profit today, it will do 200 crore profit 2 years later. On the basis of this, you should buy 10% of this company for 100 crore. That means the value of this company is 1000 crores. ये एक मेंटल मॉडल लगाया है कंपनी के ओनर ने. दूसरे साइड बैठा है शार्क और इन्वेस्टर. इन्वेस्टर ने क्या मेंटल मॉडल लगाया है? इन्वेस्टर इज सेइंग दिस कंपनी टुडे डज 50 करोड़. इवन आफ्टर एक्सपेंशन इट कैन डू ओनली 80 करोड़ ऑफ प्रॉफिट पर ईयर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई वांट 25% ऑफ दिस कंपनी फॉर 100 करोड़ रुपीज. सो द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी इन माय ओपिनियन इज 400 करोड़. यही हो रहा है. एक इधर एक मेंटल मॉडल ऑफ कैलकुलेशन है, एक इधर मेंटल मॉडल ऑफ कैलकुलेशन है. नाउ दे विल हैव टू अग्री अमंग्स देमसेल्व्स कि विच इज द फेयर वैल्यू फॉर दिस कंपनी. इज इट 1000 करोड़, इट इज 400 करोड़, और इट इज समवेयर इन बिटवीन. अब इस वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. सम इज वन मेथड, वन मोस्ट कॉमन मेथड इज मल्टीपल ऑफ रेवेन्यू. ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने के लिए कि वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है. रेवेन्यू इनटू मल्टीपल, सम मल्टीपल इज इक्वल टू वैल्यूएशन. कंपनी आज 200 करोड़ का रेवेन्यू करती है, मल्टीपल हम रखते हैं 3x, तो कंपनी की वैल्यू 600 करोड़ है. मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट, कंपनी व्हाटएवर प्रॉफिट कंपनी डज इनटू 10 इज द वैल्यू ऑफ कंपनी. वन अदर मेथड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. व्हाट इज द कैश फ्लो टुडे? डिस्काउंटिंग इट फॉर इन्फ्लेशन ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स. अगले 10 साल तक जो कैश फ्लो आएगा वो इस कंपनी की करंट वैल्यू है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर, वैल्यूएशन. हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी? व्हेन यू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द कंपनी, ओनली देन इक्विटी कैन बी सोल्ड. जब वैल्यूएशन या वैल्यू डिसाइडेड है, तभी तो ये डिसाइड होगा कि 100 करोड़ में 10% कंपनी मिलेगी, 50% कंपनी मिलेगी, 80% कंपनी मिलेगी. ये डिसाइड करने के लिए पहले वैल्यूएशन डिसाइड करना जरूरी है. शार्क टैंक में जो भी डील्स हो रही हैं, स्पेशली द डील्स दैट आर हैपनिंग फॉर इक्विटी, वहां पर सारा झगड़ा दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का है. द ओनर ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली वांट्स मोर एंड मोर वैल्यूएशन, शार्क वांट्स लेस एंड लेस वैल्यूएशन. दिस इज द गेम दैट इज एक्चुअली गेटिंग प्लेड. दूसरा ऑप्शन है आप डेट ले लो. डेट तो ले ही सकते हो, राइट? प्रॉब्लम इज स्मॉल बिजनेसेस, न्यू बिजनेसेस, स्मॉल आइडियाज, जिन्होंने अभी तक अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं की है, उनको कोई डेट नहीं देता. देयर आर वेरियस कंपनीज दैट वर लॉस मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. जोमैटो, वेरी गुड आइडिया, लॉस मेकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. विल बैंक गिव डेट टू जोमैटो? जोमैटो इज मेकिंग 300 करोड़ लॉस एवरी ईयर. विल बैंक गिव डेट टू जोमैटो? नो. बैंक विल से लॉस मेकिंग कंपनी है, पैसे वापस करेंगे कैसे, राइट? Investor might give money to Zomato, thinking that they will get profitable in future. When they get profitable, we will be able to recover money from them. तो investor दे सकता है Zomato को पैसे for equity. That today you give me 20% of your company, I think you will get profitable in future. When you get profitable, I will make my money back. So capital raise करने के दो तरीके हैं. To raise capital, there are two ways. One is debt, one is equity. This is what we are going to read now. What is debt and equity? जो भी हम शेयर मार्केट पे शेयर ट्रेड देखते हैं, शेयर्स ऑफ रिलायंस आर ट्रेडिंग
at let's say 1200 rupees. ये क्या है? ये उनकी equity की value है. Let's say one share of Reliance Industries is 0.00001% of that company. If I buy this share today for 1200 rupees, I become this much owner of Reliance Industries. जो भी शेयर मार्केट पे कंपनीज ट्रेड हो रही हैं, उनकी इक्विटी ट्रेड हो रही है. दूसरा ऑप्शन उनके पास डेट लेने का तो है. नाउ कैपिटल बैंक को जो चाहिए था, दो चीजों के लिए चाहिए था. एक प्रोविजनिंग के लिए, एक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो के लिए. कैपिटल रेज करने के दो तरीके हैं. या तो बैंक बोरो कर ले, डेट ले ले, या इक्विटी यानी कि अपने शेयर्स बेच दे. राइट? बैंक इज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी. हर कंपनी के पास ये दो ऑप्शंस हैं. या तो यू बोरो या यू गेट शेयर्स. राइट? अब पहले इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं. हाउ कैन यू ऑब्टेन डेट? डेट, मान लो मेरी एक कंपनी है और मुझे कैपिटल रेज करना है और मैं चाहता हूं, मैं अपनी इक्विटी नहीं बेचना चाहता, मैं डेट से कैपिटल रेज करना चाहता हूं. राइट? इसीलिए चैट ऑफ करता हूं मैं. यार अभी आई हैव नॉट कम टू इक्विटी येट. अभी मैं इक्विटी पे आया ही नहीं हूं. अभी हम डेट करेंगे पहले, है ना, फिर आते हैं इक्विटी पे. आई हैव अ कंपनी, आई वांट टू रेज सर्टेन मनी एज डेट. एक ऑप्शन है, आई कैन गो टू अ बैंक. आई कैन आस्क सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो. हो सकता है मैं आप लोगों को कहूं कि प्लीज मेरे प्लीज give some money to me, I will give you 10% return, etc. There are other debt firms also. I can issue bonds in the market also. बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास डेट रेज करने के लिए. now डेट में we have already read something called bonds. बॉन्ड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं. Bonds can be issued by government. Bonds can also be issued by companies. Same process can be there. Reliance Industries issues a piece of paper, says that value of this piece of paper is 100 rupees. Whoever buys this piece of paper, they can come back, give us this bond, and after 1 year we will give them 110 rupees. ये example हम पहले देख चुके हैं. Bond financing done by government can be done by companies. Bonds तो याद होगा आपको. I am assuming that you remember this. The other type of debt instrument is called debenture. Debenture भी एक bond की तरह है. It is a debt instrument. Debenture stands for debt plus venture. Big companies, government, who can give collateral against this? रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर बॉन्ड इशू करेगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे से एक लोन मांग रही है, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक टाइप की सिक्योरिटी मांगूंगा, कोलैटरल मांगूंगा. तो रिलायंस इंडस्ट्री कहेगी द सिक्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड इज माय जमशेदपुर रिफाइनरी. द सिक्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड इज माय जामनगर ऑयल प्लांट. द सिक्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड इज द प्रॉफिट लाइंग इन माय बैंक अकाउंट. गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करेगी, लेट्स से गवर्नमेंट इशूज अ बॉन्ड. गवर्नमेंट इशूज अ बॉन्ड. आई विल buy this bond only when government will give me some security. Government will say the security of this bond is Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India is that fund into which all the taxes that we collect, ये हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजटिंग में, all the taxes that we collect go into Consolidated Fund of India. Government says this bond is secured against Consolidated Fund of India. So bond किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है and bond is usually issued against a security. Therefore government bonds are also called government securities. Issued against a security, issued against the security of Consolidated Fund of India, issued against the security of Reliance Jamnagar refinery profits.
This is bond, first type of debt instrument. Second type of debt instrument is debenture, debt venture. डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज अ अनसेक्योर्ड बॉन्ड यूजुअली इशूड बाय न्यू कंपनीज. अनसेक्योर्ड इशूड बाय न्यू कंपनीज. देखो, रिलायंस को अगर आज लोन लेना है तो एवरीबडी विल बी विलिंग टू गिव देम लोन. दे आर अ ह्यूज कंपनी, दे हैव लॉट्स ऑफ एसेट्स. लेट्स से सारथी आईएएस वांट्स टू टेक अ लोन टुडे, राइट? वी डोंट हैव सच ह्यूज एसेट्स कि हम लोन ले सके. हमारे पास कोई इतना बड़ा कोलैटरल ही नहीं है दैट वी कैन टेक सच अ ह्यूज लोन. सो वी एज अ न्यू कंपनी वी विल बी इशूइंग डिबेंचर्स. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कंट्री डिलाइट. कंट्री डिलाइट बिफोर कोविड हैड वेरी स्मॉल बिजनेस, क्योंकि कौन ही पैसे देगा आपको दूध डिलीवर करने के लिए when such a huge network is already there, when people are delivering milk to you. They have risen up in COVID. COVID से पहले Country Delight was a very small company. Country Delight says our total revenue today is 50 lakh rupees. In the entire year we do business of 50 lakh rupees. We want a loan of let's say 2 crore rupees. और बढ़ा लेते हैं, we want a loan of 20 crore rupees for our expansion. Now Country Delight will issue a debenture. Why will they issue a debenture? Because they don't have collateral. इनके पास collateral ही नहीं है इस टाइप के लोन को सिक्योर करने के लिए. They are a new venture, they are a new company. A new company issues unsecured debentures. Why will somebody give them money if it is unsecured? Debentures are also of two types. One is convertible, one is non-convertible. Non-convertible generally are issued for very small amounts. Convertible are issued for large amount. What does convertible mean? Convertible means that this can be converted into equity later. Country Delight says, my value today is 40 crores. This is the valuation of my company. I am issuing debentures that are convertible for 20 crores at rate of interest of 10% per year. Now either I will keep paying you back this 10%, आप 10% पे बैक लेते रहो for let's say period of 10 years, right? You also have the option. एक तो है कि कंट्री डिलाइट कोई बहुत ज्यादा ग्रो ना करे, कंट्री डिलाइट नॉर्मली ग्रो करे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करे, आप अपना 10% लो और बात खत्म. There is one possibility which actually happened, that from this 40 crore Country Delight becomes a 400 crore company in 10 years. शुरू में उनके लिए 10% of 20 crores 2 crores वापस करना बहुत बड़ी बात थी. When they are 400 crore company, up 2 CR वापस करना कोई बड़ी बात नहीं है. Why will I give money to such a company? जब मेरे को तो यही मिलना है, बस 10% ही मिलना है. I will say, or Country Delight will say, that this amount of repayment is convertible to equity. At the time of repayment, if you want, you can convert this to our equity. मैंने कंट्री डिलाइट को ग्रो होते मैंने कंट्री डिलाइट को 20 करोड़ का लोन दिया एज अ डिवेंचर. 2-3 साल तक आई टुक द रीपेमेंट ऑफ 10%. Now the loan amount that was left was, let's say 10 crore loan amount is still left. I am seeing that Country Delight is becoming a huge company. मैं कहूंगा convert this into equity. I gave you 20 crore loan when you were a 40 crore company. 10 crore is left. That is 25% of your company's value. Convert this into equity and give me 25% shares of Country Delight. What do I actually get now for this remaining 10 crores? I get 25% shares of Country Delight.
at the value at which I had given loan. जब कंपनी 40 करोड़ की थी, मैंने तब लोन दिया था, तो 40 करोड़ की वैल्यू पे ही मैं अपनी इक्विटी काउंट करूंगा. I will simply divide 10 by 40, say it is 1 by 4, that is 25%. Now give me 25% of shares. Now I will get 25% of shares. It is convertible debenture. ठीक है, I'll repeat. चलो, I'll make this more simple for you. Country Delight currently says our revenue is 10 crores per year. Our value is 40 crores per year. ठीक है, दोबारा देखते हैं. Let's look at it again. सिंपल कर देते हैं. कंट्री डिलाइट का आज का रेवेन्यू, साल का रेवेन्यू, वट एवर दे अर्न इन 1 year is 10 crores. प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है. वैल्यू इज 40 crores. वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी एज अग्रीड बाय मी एंड कंट्री डिलाइट इज 40 crores. कहीं लिखी नहीं हुई है, हमारी अग्रीमेंट है. दिस कंपनी इज वैल्यूड एट 40 crores. कंट्री डिलाइट कम्स टू मी एंड सेज आई नीड अ लोन ऑफ 20 crores. I say, can you give me any sort of security against this? They say, no, we don't have securities to give you. हम secure नहीं कर सकते. We need an unsecured loan. This unsecured loan is what is a debenture. Country Delight says, we will pay you back 25 crores after 3 years. This is the loan condition. You give us 20 crores now. We will pay you back 25 crores after 3 years. It is an unsecured loan called a debenture. Why will I give them this loan if there is no security? It's unsecured. इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है, इतना बड़ा लोन है, छोटी सी कंपनी है, 40 करोड़ की कंपनी को मैं 20 करोड़ का लोन दे रहा हूं. So I will tell them, give me a convertible debenture, meaning that this can be converted to equity whenever I want. How will we convert this to equity? I am giving you 20 crore, value of your company is 40 crore, therefore I will take 50% shares. Now it is my choice whether I want to take 50% shares or I want to take 25 crores 3 years later. अब मेरी choice है, या तो मैं ये लूं या मैं ये लूं. Because Country Delight has no other option, they say yes, because उनके पास bond issue करने की ability नहीं है. After 3 years, 2 things can happen. Country Delight becomes a huge company. Their revenue now is 100 crores and their value now is 500 crores. Second thing is Country Delight stays as it is. ऐसे ही रहती है Country Delight या कम हो जाती है. Revenue becomes 5 crores, value becomes 10 crores. In this case, I will say, give me back 25 crores like you had promised. In this case, I will say, अब मैं आपसे 25 करोड़ लेके क्या करूंगा? Now give me 50% shares. मैंने उनको 20 करोड़ दिए और मैं लेके आ रहा हूं उनसे 50% shares. And अब इनकी वैल्यू क्या है? 250 crores. Right? When can they be converted? At what value they can be converted? How they are converted is absolutely not important. We just have to understand the concept that debentures can be converted to equity. That is why they are called convertible bond instruments. Debenture दो तरह के होते हैं. Debenture हैं unsecured, bonds हैं secured. Debentures can be converted to equity. इस तरह के भी डिबेंचर्स आते हैं जो इक्विटी में कन्वर्टेबल हैं, जैसा हमने एग्जांपल देखा, और नॉन कन्वर्टेबल भी हैं. ऐसे भी डिबेंचर्स होते हैं जो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते. डिबेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क है? डिबेंचर आर अनसेक्योर्ड, यूजुअली इश्यूड बाय न्यू कंपनीज. ओके, नाउ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इशू अनसेक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. एक सेक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट था विच वॉज बॉन्ड, ये हम देख चुके हैं. गवर्नमेंट इशू करे, कंपनी इशू करे, जनरली बिग कंपनीज एंड गवर्नमेंट इशूड दिस. नाउ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इशू अनसेक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट.
Unsecured debt instrument are very short term. When government issues unsecured debt instruments, they are very short term unsecured debt instruments and they are called treasury bills, T-bills. T-bills में special condition क्या है? That only the central government is allowed to issue T-bills. State governments cannot issue T-bills. तो अगर हम debt instruments की बात करें, what have we understood so far? कैपिटल लेने के दो तरीके हैं, डेट या इक्विटी. डेट ऑल्सो कैन बी टेकन इन टू वेज, सेक्योर्ड लोन और अनसेक्योर्ड लोन. सेक्योर्ड लोन इज नोन एज बॉन्ड. या तो आप बैंक से ले लो, अगर आप मार्केट से ले रहे हो, इंडिविजुअल से ले रहे हो, तो उसको बॉन्ड कहा जाता है. बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स, बॉन्ड आर इशूड बाय लार्ज कंपनीज. अनसेक्योर्ड लोन लेने के दो तरीके हैं. वन इज डिबेंचर्स. Debentures can be of two types, convertible या non-convertible. Unsecured loan, if issued by government, debentures are usually by new companies. Unsecured loans, if issued by government, they are usually for a very short duration like 14 days, 90 days, इस type के short duration. These are called treasury bills. And only the central government, not the state government, only the central government is allowed to issue T-bills. Otherwise, state governments are not allowed. Is this clear? Is this distinction clear? State governments can issue bond. Bond can be issued by state government. This state government can issue. State can issue bond. They cannot issue treasury bills. All right. Now, there are also two other types of debt called subordinate और preferred debt. ये इसकी हम बात कर रहे थे, subordinate और preferred debt. ठीक है? For this, I will give an example. I'll take the name of three people: राशि, जोयता and खुशी. जो last three comments दिखे मुझे, राशि, जोयता, खुशी. I wanted a total loan of 300 rupees. मुझे एक टोटल लोन चाहिए 300 रुपीज का. ठीक है? I say to Rashi, you give me 100 rupees in loan. I say to Joyita, you give me 100 rupees loan. And I say to Khushi, you give me 100 rupees loan. I tell them that in case of any problem, वैसे तो मैं दे ही दूंगा, वापस मैं रीपे करूंगा ही, but in case of any problem, I will first repay the loan given by Rashi. Second, I will repay the loan given by Joyita. And third, I will repay the loan given by Khushi. मैं इस ऑर्डर में रीपेमेंट करूंगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो ऐसा हो गया कि मेरा बिजनेस नहीं चला, यू हैव टू लिक्विडेट माय एसेट्स, तो सबसे पहले राशि का पूरा लोन रीपे होगा, फिर जोयता का पूरा लोन रीपे होगा, फिर खुशी का पूरा लोन रीपे होगा. राइट? अब who will ask for the highest rate of interest from me? इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से कौन मांगेगा? Obviously, Khushi will ask for highest. Let's say now I am unable to repay my loan. If I am unable to repay my loan, this loan is less than 100 crores. तो लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ का लोन तो नहीं है, 300 रुपए का लोन है. तो यहां पर क्या होगा? सरफेसी एक्ट लगेगा. अंडर सरफेसी एक्ट, माय एसेट्स विल बी
liquidated, my assets will be sold. पता चला कि सिर्फ 250 रुपीज के एसेट्स थे मेरे पास, तो राशि will get complete amount, Joyita will get complete amount, Khushi will only get back 50 rupees. Khushi's risk is maximum. सबसे ज्यादा रिस्क खुशी का है, because she will get repaid last. Rashi's risk is minimum. So Rashi will say, I am willing to give you 100 rupees loan for 5% rate of interest, or let's say 15% rate of interest. Joyita will say, I want 20% rate of interest. Khushi will say, I want 25% rate of interest. Risk ज्यादा है तो मुझे ज्यादा rate of interest चाहिए. In this case, Rashi's debt is paid first, then Joyita's debt is, तो first पूरी राशि की debt, फिर Joyita की पूरी debt, फिर खुशी की पूरी debt. This is the waterfall model of debt repayment. First, this debt, Rashi's debt, will be paid fully. Then Joyita's debt will be repaid. Then Khushi's debt will be repaid. अगर जितने भी assets हैं पहले ये भरे जाएगा, कुछ बचा तो ये डेट भरी जाएगी, फिर कुछ बचा तो ये डेट भरी जाएगी. This is the riskiest debt. This is the safest debt. This is known as preferential debt. This ये तो normal debt है, normal. This is known as subordinate debt. This debt will have to be repaid first. तो safest हो गई वो preferential debt. So preferred debt gets repaid first, then normal debt gets repaid, then subordinate debt gets repaid. Is this clear? याशी सिंपल है यार. खुशी इज आस्किंग फॉर मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज उसकी डेट सबसे ज्यादा रिस्की है, सबसे कम चांस है कि उसको वापस मिलेगा पैसा अपना, द रिस्क इज हायर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफर्ड डेट एंड सबऑर्डिनेट डेट. समझे? अब another type of debt instrument is called commercial paper. ये भी एक type of debt instrument है called commercial paper. This is a unsecured debt instrument but for a very short period, again issued by a company. तो हमने जो debt instruments देखे, debt लेने के तरीके देखे, obviously simple तरीके तो हमें पता ही है, बैंक से लोन ले लो, उधार मांग लो. But in the market क्या होती है, we'll just understand. In the market, various ways to take debt are there, secured or unsecured. Secured में there can be bond. Bond can be issued by government or large companies and state government also. Unsecured में companies issue debentures. Debentures are either convertible or non-convertible, issued by new companies. They are unsecured debt generally for a long time. Companies can also issue short-time unsecured loans known as commercial papers. Government can also issue very short duration unsecured loans known as treasury bills, which only central government can issue, state government can not issue. ये हैं debt लेने के तरीके. Other than of course going to a bank. बैंक का तरीका तो है ही आपके पास. Other than that, these are the ways to take debt from the market to raise capital. कैपिटल रेज करने के दो तरीके, डेट और इक्विटी. डेट में ये सारी चीजें हैं. डेट हम वैसे भी काफी पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलमोस्ट रेड एवरीथिंग रिलेटेड टू डेट सो फार. हम बैंकिंग, लोन्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम डेट रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं. नाउ वी विल कम टू रीडिंग द कोर ऑफ कैपिटल मार्केट्स विच इज इक्विटी. अब हम इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे. नाउ इक्विटी में मैंने आपको क्या बताया, मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है. व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी. यही हम देख रहे थे कि मेरे हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू 400 करोड़ है, आपके हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है. बहुत सारे तरीके हैं वैल्यूएशन फाइंड करने के. रेवेन्यू को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, एबिटा को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉफिट को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. देयर आर वेरियस वेज
of finding out the valuation of a company. Okay, if two people have to agree, I have to sell my company's shares to you. I want to raise 100 crores. You say I want 25% shares. I say I will only give you 10%. Then we will discuss, debate, and one person will have to agree. Right? यहां तक समझ आया कि वैल्यूएशन में क्या चल रहा है? Now till here is it clear what is happening in the case of valuation? Valuation कैसे डिसाइड हो रही है? All right. अब there is one company called Ankit. How can valuation not be clear यार? ठीक, आप डाउट फॉर्म भेज देना फिर मुझे. आई मीन वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि इसकी वैल्यू क्या है. वैल्यूएशन इज नथिंग बट वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? Okay, I cannot probably explain valuation more than this. If there are any further doubts, you can Ankit, you can send them on the doubt form. Right? अब दो तरह की कंपनीज हैं दुनिया में. One company is a company that is being traded in the stock market. जैसे कि रिलायंस. इफ यू वांट यू कैन बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस टुडे. आप अभी जाके रिलायंस के शेयर्स खरीद सकते हो. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, है ना. एक और टाइप की कंपनी है कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनीज. दीज कंपनीज आर नॉट बीइंग ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट. जैसे कि सारथी आईएएस. आप अभी स्टॉक मार्केट में जाके सारथी आईएएस के शेयर्स नहीं खरीद सकते. आपको खरीदने हैं तो आपको वरुण सर से खरीदने पड़ेंगे. राइट? यू विल हैव टू गो टू वरुण सर, अप्रोच वरुण सर एंड से आई वांट दीज मेनी शेयर्स. ये मार्केट में खुली ट्रेड हो रहा है. राइट? रिलायंस इज बीइंग ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट. अभी देखते हैं, कुछ चीजें समझते हैं इस चीज की. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कंपनीज दैट आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट. व्हाट इज दैट केस? तो एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर. देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर का प्राइस है. क्या क्या लिखा है इस पे देखते हैं. प्राइस ऑफ वन शेयर इज दिस. रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर का कितना प्राइस है? 1251.15 रुपीज. ठीक है. यहां पर क्या लिखा है? ओपन. किस वैल्यू पे ओपन किया, कहां पर हाई पे गया, लो पे कहां पे गया, ये इंपॉर्टेंट है. मार्केट कैप इज 16.80 ट्रिलियन रुपीज. 16 ट्रिलियन रुपीज इज द मार्केट कैप. ये डिसाइड करते हैं. ये देखते हैं कहां से आया. एक्चुअली अभी तक क्लियर है? आर यू गाइज फॉलोइंग विद मी सो फार? थोड़ी लंबी क्लास हो गई है. सो आर यू विद मी सो फार? वो आएंगे वन शेयर का क्या मतलब, वही बता रहा हूं. उस वन शेयर का मतलब क्या है? ओके, मजा आ रहा है ना? लाइक you are able to understand, having fun. अब ज्यादा मजा आएगा. ठीक है. now we will actually understand more. Let's talk of Reliance Industries. Reliance Industries is, let's say, at one point owned by only one person, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani ji has 100% of shares of Reliance Industries.
सारे शेयर्स मुकेश अंबानी जी के पास हैं आज, ठीक है। वो कैसे पहुंचते हैं पब्लिक में, वी विल सी दैट ऑल्सो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ वन शेयर। इट इज कंप्लीटली अप टू रिलायंस इंडस्ट्रीज कि वो कितने शेयर्स निकाले। कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। व्हाट इज फ्रेश इशू, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज क्लियरिंग हाउस, व्हाट इज आईपीओ, सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मुकेश अंबानी जी currently owns 100% of this firm. 100% of this firm. Let's say there are 10,000 pieces of paper that Reliance Industries issues. Reliance Industries issues 10,000 pieces of paper and says that if you own this piece of paper, अगर आपके पास ये पेपर अगर आपके पास है, person who owns this paper will be 0.01% owner of Reliance Industries. Reliance Industries says there are 10,000 papers. Whoever is the owner of these 10,000 papers, if you have one paper, you are 0.01% owner of Reliance Industries. If you have 100 papers, you become 1% owner. If you have 10,000 papers, you are 100% owner of Reliance Industries. This paper is now a share of Reliance Industries. This paper represents 0.01% share in the ownership. Share is nothing but an instrument of ownership. Currently, Mukesh Ambani ji owns all of these 10,000 papers. Currently, Mukesh Ambani ji has 100% equity in Reliance Industries. 100% equity is there. He owns these 10,000 papers, owns all of them. Okay. Now, Mukesh Ambani ji says, I need to raise some money from equity. I want to raise money from equity. What is his equity? Those 10,000 pieces of paper, each of which denotes 0.1% share of ownership, 0.01% share of ownership of Reliance. If he sells one paper to me, for, let's say, 1 crore rupees, what will be the valuation of Reliance Industries? ये आप सोच के बताओ. What will be the valuation of Reliance Industries if I buy one of these papers for 1 crore rupees? Simple. Valuation will be 10,000 crores. For 1 crore rupees, you can own, 0.01% of Reliance Industries. For 10,000 crore rupees, you can own 100% of Reliance Industries. 10,000 crores is the valuation of Reliance Industries. क्लियर हुई है बात? Is this clear? Okay. Now, Reliance Industries is getting traded in the market. मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ट्रेड हो रहा है. इसको समझाता हूं. मुकेश अंबानी जी सेल्स वन पेपर ऑफ ओनरशिप टू मी फॉर 1 crore rupees.
What is valuation of Reliance Industries? 10,000 crore. Because obviously there are 10,000 such papers. I sell this to you and you buy it for 2 crore rupees. अब आपने मेरे से ही आपने देखा नेक्स्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज और ग्रो कर गई, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर दिया. नाउ यू बाय इट फॉर 2 crore rupees. What is the new valuation of Reliance Industries? अब क्या है वैल्यूएशन? Now what is the valuation of Reliance Industries? Obviously it is 20,000 crores. Later you sell it at a loss. You sell it at 1.5 crore rupees to person 3. Now what is the valuation? Valuation will be 15,000 crores. है ना? यही चीज है. One other word for valuation is market cap. Market capitalization. Market capitalization. If this company was to raise all the capital possible it can from the market, how much money would it acquire? If this company was to sell 100% of its shares in the market, how much capital would it acquire? That is market cap, exactly same as valuation. Mukesh Ambani ji sells one paper to me for 1 crore. So he is able to raise 1 crore rupee from one paper. If he was to sell 10,000 papers, he would be able to raise 10,000 crores. Nothing but market cap. So market cap is the same, no difference. Market cap and valuation are the same things. ठीक है? Now, यहां पर हमने देखा Reliance Industries had 10,000 shares. How many of these shares Reliance Industries want to make? Reliance Industry कहता है मैं 10,000 शेयर बनाऊंगा. If Reliance Industry makes 10,000 shares, these shares will represent 100% ownership. That means one share will represent 0.01% ownership. Is this clear? Reliance Industries themselves said we want to make 10,000 shares. 10,000 shares represent 100% ownership. If they had made just one share, अब इसमें से अगर मैं एक देखूं, एक की बात 0.01% है. Reliance Industries could have said we only want to make 100 shares. If they say 100 shares, one share would mean 1% ownership. Right? It is totally up to Reliance Industries how much shares or how many shares they want to issue, depending on size of company. If it is a very large company, very big company, they will issue more shares, more number of shares. Right? है ना? अब currently what is the status of Reliance Industries? Reliance Industries, let's say, has issued 1 lakh shares. Reliance Industry ने 1 lakh shares issue किए हुए हैं. Out of these 1 lakh shares, 45% are held by Mukesh Ambani ji. 30% are held by other members of his family. 25% are held by general public. Who is general public? You and me. तो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो सिर्फ इतने ही हैं. This is what he has sold in the market. He had all of these 1 lakh. He said 45% of these 1 lakh I will keep with myself. 30% I will give to my family. 25% I will give in the market. 25% मैं मार्केट में देना चाहता हूं, लोग आपस में ट्रेड करें इन 25% को. Now this 25% of 1 lakh, this is 25% of 1 lakh, meaning 25,000 shares of Reliance Industries are in the market for trading.
हाउ दिस नंबर इज डिसाइडेड इज एब्सोल्युटली अप टू रिलायंस इंडस्ट्रीज. उनकी मर्जी है, वो 1 लाख करे, 1 करोड़ करे, 1 लाख करोड़ करे, इट इज कंप्लीटली अप टू देम. टोटल रिप्रेजेंटेशन विल ओनली बी 100% ना. मैं कितने पेपर्स इशू करता हूं वो मेरे ऊपर है, वैल्यू तो 100% से बढ़ नहीं सकती ना. इट इज अप टू मी. रिलायंस इंडस्ट्रीज डिसाइड्स आई वांट टू इशू 1 लाख शेयर्स. 1 लाख कैसे इशू होते हैं, आई जस्ट हाउ दिस नंबर कम्स वी विल आल्सो सी व्हेन वी सी व्हाट आईपीओज आर. रिलायंस इंडस्ट्रीज सेज आई हैव 1 लाख शेयर्स. 1 लाख शेयर्स में 45% मुकेश अंबानी जी विल कीप, 30% मुकेश अंबानी जी की फैमिली विल कीप, 25% विल गो टू द पब्लिक. पब्लिक में अब 25,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं. 1 शेयर नाउ, 1 share that is being traded in the public, how much ownership does it represent? It represents 1 by 1 lakh ownership. 1 share now represents 1 by 1 lakh ownership because 1 lakh shares represent 100% ownership. 1 share will represent 1 by 1 lakh ownership, or rather 100 by 1 lakh ownership. Right? Is this clear? 1 lakh shares represent 100%. 1 share will represent 100% by 1 lakh ownership. Is this clear? 100% divided by 1 lakh, this is the ownership 1 share represents. मार्केट में इस एक शेयर का प्राइस इज 1251 रुपीज. सो यू कैन बिकम 100 by 1 lakh% owner of Reliance Industries for 1251 rupees. So you can become 100% owner of Reliance Industries by 1251 lakh rupees. This becomes valuation और market cap. हर शेयर के नीचे उसकी market cap लिखी होती है. This is how it is calculated. This is the meaning of the word market cap. अभी हम इसे हम और डिटेल में देखेंगे when we see IPOs etc. But a broad idea should be given to you, नहीं तो ये टॉपिक हमें समझ नहीं आएगा. I hope this is clear. यहां जो ये market cap लिखी है, what does this represent? 100% of shares are available for this price. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन है 16 ट्रिलियन रुपीज. 16 ट्रिलियन रुपीज इज द करंट वैल्यूएशन. $16 trillion is 16 lakh crore rupees. ठीक है. So current value, if you want to acquire or buy Reliance Industries, it is available for a small value of 16 lakh crore rupees. The total value of Reliance Industries is 16 lakh crore rupees. 1 share is available for 1,251 rupees. 1,200 rupees का एक शेयर है. Now I can calculate what sort of ownership does this share represent. अब मुझे पता है ये कितनी ओनरशिप होगी. दिस विल बी 0.000000001%. दिस इज दिस एंटायर स्पेक्ट्रम. आपको ये समझ आ गया? राइट? इज दिस क्लियर? नहीं, नेटवर्थ इज नॉट द सेम एज वैल्यूएशन. नेटवर्थ पे आएंगे. इज दिस क्लियर? ये समझना बहुत जरूरी था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. हम क्या देख रहे थे? दैट इन द केस ऑफ इक्विटी,
वैल्यूएशन इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट, वैल्यूएशन सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है एज फार एज इक्विटी इज कंसिडर्ड, राइट। कुछ कंपनीज तो मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, सम कंपनीज आर ट्रेडेड इन द मार्केट लाइक रिलायंस, इफ दे आर बीइंग ट्रेडेड you know their market value. Today market value of Reliance is 16 lakh crore rupees. If share of Reliance becomes, आज शेयर 1200 रुपए का है, कल अगर 2400 रुपए का हो गया, that means this will become how much? 32 lakh crores, है ना? Market cap and valuation are the same thing. Market cap is just another way for saying valuation. They are the same thing. Is this clear? आज शेयर 1200 रुपए का है, कल अगर शेयर प्राइस डबल हो गया, वैल्यूएशन भी डबल हो जाएगी, मार्केट कैप भी डबल हो जाएगी, राइट? इज दिस क्लियर? नाउ अगर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इफ द शेयर इज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट, if the share is being traded in the market, I will know the valuation. The other case is, what if share is not being traded in the market? Then valuation is made on the base of mental model. जो हम देख रहे थे कंपनी का वैल्यूएशन, I would say this company is worth 400 crores, you are saying it's worth 1000 crores. मेरा एक अलग mental model है, आपका एक अलग mental model है. This is the case of unlisted company जो market में trade नहीं हो रही. Freely it is not getting traded, not anyone can buy it. This is getting traded in the market. Reliance Industries is getting traded in the market. This is the case of market value और market cap. हैं दोनों सेम चीजें. यहां पर it will be agreed between the two of us since there is no market cap available. सारथी आईएएस की आज वैल्यू क्या है? Since the share does not get traded, सारथी आईएएस का शेयर ट्रेड नहीं हो रहा, I will say it has a certain value, Varun sir will say it has a different value. रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू पे किसी को कोई डाउट नहीं है. इट इज प्रिटी क्लियर सिंस इट इज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट. नाउ टॉपिक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. टॉपिक शुरू हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है टॉपिक. लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम. लेट्स टेक अ ब्रेक. 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे.
All right. Okay. I think we can stop here. I think थोड़ा ज़्यादा हो गया. And I think कल start कर लेते हैं. We will start from here tomorrow. कल capital markets यहीं से start करेंगे. ठीक है. जो भी आपके doubts हैं, कितने shares हैं, how they are issued, they will get clear. मैं बस आपको दिखा देता हूँ. I'm not teaching anything. Just letting you know. हम कल यहाँ से start करेंगे. We will assume there is a small business जो अभी start हुआ है. ठीक है. इस टाइम पे इन्वेस्टर कोई आता है, फिर वेंचर कैपिटल फर्म क्या होती है, फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी में क्या होता है, ज्यादा फंड्स होते हैं तो कैपिटल मार्केट ऑपरेट कैसे करती है, इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती कैसे है. दिस इज हाउ एनी स्टार्टअप वर्क्स इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम सीड कैपिटल to venture capital to private equity, then IPO, then public market, then secondary offering. ये कल सारा डिटेल में देखेंगे. जोमैटो का केस स्टडी भी मैंने लिखा था आप लोगों के लिए कि जोमैटो ने रिसेंटली पब्लिकली जोमैटो का शेयर अवेलेबल है. सो इफ यू सी मे बी 2-3 years बैक दिस वाज नॉट अवेलेबल. आप जोमैटो का शेयर यू कैन बाय टुडे, राइट. सो इफ यू वांट जस्ट टेक अ लुक दैट जोमैटो शेयर प्राइस इज अवेलेबल नाउ. 272 रुपीज का जोमैटो का शेयर अवेलेबल है. जोमैटो का आईपीओ हुआ. जोमैटो डिड नॉट हैव अ शेयर्स अवेलेबल 2-3 years बैक. नाउ लास्ट ईयर दे हैव डन एन आईपीओ. कल हम यहां से पढ़ेंगे. ठीक है. सो वी विल डू दिस इन डिटेल फ्रॉम टुमारो. वन थिंग दैट वी हैव टू डू टुडे is we have to look at the answers you have written for GS3. कल हम सब समझेंगे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप क्या होता है. सी आई हैव जस्ट स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ इक्विटी. आई हैव नॉट फिनिश्ड इट. जब वो खत्म हो जाएगा ऑल ऑफ दीज डाउट्स विल गो अवे. पीडीएफ इज ऑलरेडी अपलोडेड या हो जाएगी अपलोड. उसमें सब लिखा है. वी विल लुक एट दिस इन डिटेल. वन होमवर्क फॉर यू इज फर्स्ट, प्लीज रीड द केस ऑफ एसआर. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि आईबीसी में क्या हुआ एसआर स्टील के केस में. सेकंड, गूगल जोमैटो आईपीओ, या ये भी रहने दो, वॉच एनी एपिसोड ऑफ शार्क टैंक. कोई भी एपिसोड शार्क टैंक का आप देख लेना. दिस विल बी इजियर, दिस विल बी फन ऑल्सो. अश्नीर वाला एपिसोड देख लेना कोई, जिसमें ही इज स्कोल्डिंग और सेइंग थिंग्स टू पीपल. वो मजा आता है देखने में लोगों को. So please watch one episode of Shark Tank for 20-25 minutes. I just want you to watch 2 or 3 deals. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इक्विटी मार्केट में होता क्या है. कल से we will YouTube पे देख लेना. शार्क टैंक तो YouTube पे अवेलेबल है. YouTube पे एनी एपिसोड ऑफ शार्क टैंक, आपकी चॉइस का कोई भी एक एपिसोड 1.5x पे 30 मिनट्स के लिए देख लेना. ठीक है. आई एम जस्ट टर्निंग द वीडियो ऑफ फॉर 1 second. आई हैव टू लोड योर GS3 आंसर्स. GS3 के आंसर्स देखते हैं, या वो भी कल करना है. आई एम ऑल्सो टायर्ड, राइट. सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट गेट टायर्ड. इट्स जस्ट दैट अब कुछ करना है तो करना है, राइट. ठीक है, कोई नहीं, वो भी कल कर लेंगे. फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. प्लीज रिवाइज कर लेना आज की क्लास. प्लीज रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड टुडे. ठीक है. एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो. यहीं से स्टॉक मार्केट को ही कंटिन्यू करेंगे कल यहीं से. ये देख के आना प्लीज. इवन इफ यू डोंट रीड दिस इज ओके. प्लीज वॉच वन एपिसोड ऑफ दिस. प्लीज वॉच वन एपिसोड ऑफ दिस. ओके.
यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। शार्क टैंक का एक एपिसोड देख लेना, ठीक है? एनी वन एपिसोड ऑफ शार्क टैंक, एनी वन एपिसोड ऑफ योर चॉइस, प्लीज वॉच, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, होप यू एंजॉयड द क्लास। देखो अभी हमें काफी कुछ पढ़ना है इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है? लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स वी हैव टू लर्न अबाउट कैपिटल मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिटेल में हमें पढ़ना है। तो क्लास टाइमिंग इज एट 4:30 सेम, 4:30 मिलते हैं। वी विल रीड एवरीथिंग अबाउट इक्विटी मार्केट टुमारो। हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज इक्विटी मार्केट, ठीक है? प्लीज रिवाइज टुडेज क्लास एंड प्लीज वॉच वन एपिसोड ऑफ शार्क टैंक, ठीक है? एनी एपिसोड ऑफ योर चॉइस, ऑलराइट? ठीक है, चलो, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।